Assalamu alaikum, ladies and gentlemen. I welcome all of you to the 9th module of the diabetes course being arranged by Pakistan Academy of Family Physicians and Pakistan Society of Internal Medicine. Now I request the panelists of this session to have a seat on the stage. Dr. Sajid Ubaidullah, he is the ex-head of Department North Medical Unit, Mayo Hospital, Lahore, and is also Vice President, Punjab, Pakistan Society of Internal Medicine, Lahore. Dr. Arshad Shahood, he is the Chairman, CME, Pakistan Academy of Family Physicians. Dr. Tahir Chaudhary, General Secretary, Pakistan Academy of Family Physicians. Dr. Suhaib Ahmed, Senior Office Bearer of Pakistan Academy of Family Physicians. Dr. साहब आ जाएं, अच्छी डिस्कशन रहेगी फिर आपकी. Our speaker today is Dr. Somia Iqtidar. She is the Associate Professor of Medicine and Head of North Medical Unit, King Edward Medical University and Mayo Hospital, Lahore. She is also General Secretary of Pakistan Society of Internal Medicine and also Chairperson, Dengue Advisory Group. She is a very competent lady doctor and has done a lot of work in dengue and corona epidemic. Her topic of discussion is insulin therapy for type 2 diabetes mellitus, when and how, conventional versus analogues. I request Dr. Somia Iqtidar to elaborate this topic for us. Thank you. Thank you very much for your very kind introduction. With the permission of the chair, I'm very delighted today that my professor, my mentor, Professor Sajid Ubaidullah, is sharing this session today. And after his retirement, this is the first session that he is sharing, and this is the first presentation that I am making in front of you. Ladies and gentlemen, we all know that whenever there is a poison, there is an antidote for that poison. So today we will not only be revising diabetes, but we will be revising some common poisons that you can encounter in your clinical practice. And let's revise what are the antidotes for them. So it's quiz time. So if I say about rat pill, can anybody tell me what is the antidote of rat pill? What do you have to give? If a patient comes to you with rat pill poisoning, then vitamin K, very nice. So what about paracetamol overdosage? What do we give? Okay, we give acetylcysteine, benzodiazepines. Very commonly, patients come with overdosage of benzodiazepines. So we give flumezanil to these patients. It's available in injectable form. Similarly, iron ki overdosage ho jati hai, so we give desferoxamine. Narcotics बहुत common है, उनकी overdosage हो जाती है, हम naloxone देते हैं patients को. Heparin overdose, accidental हो गई है या emergency department में आपने देखा है patient को heparin दिया है, वो bleed करने लग गया है, तो फिर हम क्या देते हैं? We give protamine sulfate to these patients. Similarly, ladies and gentlemen, there is another poison, and that poison is very sweet tasting, because that poison is glucose, and it causes toxicity quite often in our body. And what is the antidote of glucose? Insulin. So if there is excessive glucose in the body and we need to lower it, we give insulin to this body. So today I will be talking to you about this sweet poison and the antidote of this poison, which is insulin. And I will be talking to you about insulin therapy for type 2 diabetes mellitus, how to initiate, when to initiate, and then how to titrate and intensify the treatment. And I will be briefly touching upon the conventional insulins that we've been using for many decades now. It's 100 years of celebration of insulin last year, and now the newer generation of insulin or analogues. So अगर आपके पास पेशेंट आया तो आप पहला सवाल बीइंग डायबिटिक आप पूछते हैं शुगर कैसी है, या मरीज का जवाब होता है डॉक्टर साहब शुगर बिल्कुल ठीक है, कितनी, फास्टिंग 200-250, रैंडम 300, बिल्कुल ठीक, कंट्रोल है. So
patients very often try to bluff with the doctor saying that sugar ka koi masla nahi hai, wo theek hai, ab ye masla hai. But we all know that diabetes is a growing concern for every one of us. Around the globe, it has turned into an epidemic, but particularly in Asia, Southeast Asia, and Pakistan, it is rising with every passing day. And we have achieved #3 position in the world where the diabetes burden is the highest. And this is really alarming. In the world, if we talk about 1 in 9 adults, they are diabetic. 1 in 10 adults, they are either pre-diabetics. 1 in 18 adults has impaired fasting glucose level. There are 1.2 million children and adolescents below the 20 years of age who are living with type 1 diabetes mellitus, and it leads to about 6.7 million deaths every year. And 3 in 4 people with diabetes live in low and middle income countries. And unfortunately, Pakistan is also one of them. And we have a severe economic burden because of the treatment of the diabetes that we have to offer to our patients. So if I talk about top 10 countries with diabetes, we all know that Pakistan is #3. And in adults aged 20 to 79 years, the diabetes-related health expenditure, if we compare it with the countries with lesser burden, is much lower in countries like Pakistan and India, because we are underdeveloped or low or middle income countries. So that the need of giving attention to the treatment of diabetes and spending on the patient care is, there's a great imbalance between the burden of the disease and the amount of money that we invest in the healthcare of these patients. And when we talk about type 2 diabetes, I'm very glad that we are having this course for the last so many weeks now, in which we are updating the knowledge of our family physicians, which are the backbone of our healthcare system. And diabetes is the major chunk of the disease which they see there in the clinical practice. So whenever we talk about treatment of type 2 diabetes, we always talk about diabetes education first, which involves telling the patient what this disease is, what they need to do, what changes they have to take in their lifestyle, in their diet, in their weight control. And #3, checking of the blood sugar level or self-monitoring of the blood glucose level, which is also equally important in diabetes education. And then telling the patients to look for complications, early diagnosis of any micro or macrovascular complications, any red flag signs, and this will prevent them from the long-term complications like retinopathy and heart disease. So why is it important to control your blood sugar levels? Is it just treating the numbers, or there is an added benefit? If we control our blood sugar levels, obviously there is an added benefit. And the epidemiological extrapolation showed by the UK PDS, it showed that benefit of a 1% reduction in mean HbA1c level leads to 21% reduction in the deaths related to diabetes. Similarly, only reducing HbA1c to 1% leads to lesser microvascular complications like kidney disease and blindness by 37%. There are lesser chances of heart attack by 14%. The leg amputations or the foot amputations of peripheral vascular disease also improves by 43% if we control our blood sugar levels. And there is reduced incidence or prevalence of stroke if HbA1c levels are decreased by 1%. And there is a term which we call as metabolic memory, or we call it a legacy effect, in which if we see the data of UK PDS, which is one of the biggest or landmark trials of the diabetes treatment. So we had 2 groups. One was intensive and the other was conventional treatment. So we thought that obviously because we are giving intensive therapy, the blood sugar control will be better. So the blood sugar control, if it is better, that is translated in terms of
decrease microvascular complications, decrease myocardial infarction, or any diabetes-related endpoints. And we did see that in a period of 20 years trial of UKPDS, there was a remarkable reduction in any diabetes-related endpoint, microvascular disease, and myocardial infarction. But we thought, why not follow up these patients without any intervention for a longer period of time? So for another period of 10 years, they were just studied, and it was seen that after 30 years from the initiation of trial and 10 years after the completion of the trial, there was still the benefit of intensive control of blood sugar, and this is known as the metabolic memory. So tighter the control in the initial phase of the diabetes, the better it is to prevent long-term complications in these patients, even when you're not giving any intervention in that trial. So this is known as the metabolic memory and legacy effect, which has shown tremendous benefit in the life of the patients. Now, the second question that I'm going to put to my audience today is, you are treating diabetes, and you know the first line usually that we use are the oral anti-diabetic drugs. So if you are giving oral anti-diabetic drug to these patients, and if you are giving 2 drugs, but the problem is still there and the blood sugar levels are not controlled, should we add a 3rd drug or should we add insulin to these patients? How many of you say that we should add a 3rd drug to these patients? Okay, and how many of you say that we should add insulin to these patients? So majority, I think that insulin is a better choice if there is not adequately blood sugar control with 2 drugs. So the answer is that you take help of HbA1c, because this is the guiding tool. If your patient's HbA1c is very high, then you do not expect a magic 3rd drug to decrease your blood sugar levels to achieve the targets or controls. But if it is adequately controlled and not very high, you might as well can give a trial of a 3rd oral anti-diabetic drugs. So the next question arises that if you have to add a 3rd add-on therapy after 2 drugs, which option will decrease the maximum HbA1c according to you? Is it metformin? Is it sulfonylurea, DPP-4 inhibitors, insulin, GLP receptor agonists, or lifestyle modification? Decrease maximum HbA1c, insulin. So the data has shown that insulin has the highest potential of decreasing the HbA1c if we compare it to both oral and injectable therapies. We didn't use the term injectable therapies before because we didn't have GLP-1 before, but now the data has shown that even if we compare it with injectable therapies like GLP-1 and oral anti-diabetics with a very good glycemic control like sulfonylureas, which are not the first line prescribers in the influential countries, but still in the lower and middle income countries, the highest efficacy is of insulin if used as a therapy, single therapy. So insulin is the best if we talk about diabetes control or bringing down the HbA1c only. So talking about the exogenous insulin therapy. So insulin therapy actually becomes necessary because of the nature of the diabetes, nature of this disease. We all know that it starts with insulin resistance, obesity being one of the risk factors, which leads to impaired fasting glucose, and then gradual beta cell failure leading on to diabetes. And then with the course of diabetes going on for years and years, your insulin levels start decreasing, and insulin resistance is also there, leading to uncontrolled hyperglycemia. So this is the time when you need to give patients something to control your blood sugar levels, and beta cell are already failing, and you need to give something which is not produced inside the body to counteract this hyperglycemia. So if insulin level is continuously decreasing with the progression of disease, this is the time when need to identify the need of giving
and exogenous insulin therapy to these patients. So when to start insulin therapy? This is the next question. How early is early when we are initiating insulin therapy? So at the diagnosis of diabetes, is that the early insulinization? Is it when there is secondary oral anti-diabetic failure? Because we feel the need, because we cannot control the glycemia despite giving oral drugs, should we start insulin then? Or should we start insulin when patients have developed current complication, then there is no other choice? So those who think that we should start insulin right from the diagnosis of diabetes, please raise your hand. Those who feel that after the failure of oral anti-diabetic drugs, we should initiate insulin therapy, please raise your hands. Okay. Very good. So you remember. And chronic complications, obviously, we want a better glycemic control because we need to add years to the life of the patient. And that too, quality of years is also important. So in the Asian context, we all know that we eat curries and rice and food which has high glycemic index. And the postprandial glucose response to a meal is more pronounced in Asian population. So the agents and insulins which target our postprandial blood sugar are the choice in our set of people. And the recent studies have shown that initiating insulin with premixed analogues is an effective strategy to improve glycemic control because they have minimal risk of hypoglycemia in this population. And then we also know that glucose lowering is not the only effect that we are looking for. And we know that insulin, though, has the highest effect on the HbA1c level and it decreases our blood sugar levels, it also has some added benefits. And we want to get benefit of these added effects of the insulin, like it preserves beta cells. Unki burnout nahi hone deti. Then it corrects the endothelial dysfunction. Then insulin is a very good anti-inflammatory product. Then it has antiplatelet effects, and it improves the overall quality of the life with improving the glycemic control. Similarly, it leads to decreased glucotoxicity and lipotoxicity. And diabetic dyslipidemia also gets better when you give insulin. And the insulin resistance also decreases. So there, beyond the glycemic control, there are so many added benefits of insulin that we want to take use of. So the insulin is given to prevent micro and macrovascular complications. And we are giving insulin not just to achieve the target of lowering your blood sugar, but not treat failure. It shouldn't be that now the oral antidiabetics have failed and now I have no other choice. So now I am going to start insulin. You have to treat to target. कि मैंने अपना टारगेट अचीव करना है, as early as possible आप टारगेट अचीव करेंगे, the metabolic memory or the legacy effect will improve the quality of the patient's life in the long term. So remember, treat to target and not treat that everything has failed and I have no other choice. And time is essence, ladies and gentlemen. When therapy with multi-oral agents fail, exogenous insulin is required and is usually added to one or more of the existing regimes of the oral agents that you are prescribing. But by the time insulin is initiated, a lot of patients have already had some kind of an organ damage. So more importantly, beta cell dysfunction is established and is at irreversible level. So please identify what is the right time to initiate insulin in these patients, because initiating at the right time is also very important. So let's look at what are the indications of insulin therapy. So insulin should be started when there is significant hyperglycemia, like HbA1c is way above your target, which is 9%. Your fasting blood sugar level is more than 250,
and your random blood sugar levels is more than 300 milligrams per deciliter. Or when the patient is symptomatic, patient complains of severe persistent weight loss, polyuria, polydipsia, and when multiple non-insulin injectable or oral therapies have failed to achieve individualized glycemic targets. This is the time which you need to put the patients on insulin therapy. But apart from them, there are other indications of insulin therapy as well. Patients who are in some critical illness, कोई surgery हुई है, कोई acute emergency हो गई है, MI है, this is the time that we give insulin to the patient in hospital settings. Patients with intolerance to oral agents, आप दवाई उसको दे रहे हैं पर उसको वो intolerant है, metformin को intolerant है, या SGLT2 inhibitors की वजह से उसको repeated UTI और and is unable to tolerate the side effects, or you can't give drugs because of some contraindication to these patients, like renal profile is grossly deranged, then you need to switch these patients to insulin therapy. And patients of LADA, which is latent autoimmune diabetes in adults, this is also one of the indications of starting an insulin therapy. Anyone who can tell me the contraindications of insulin therapy? Allergies? Underweight? Did somebody overweight? Overweight को insulin नहीं दे सकते? Okay, if actually speaking, allergy can be possible due to anything, you know, any drug. Allergic to a common हो जाता है. But if you ask me, there are none. There is no contraindication to give insulin. However, caution is required in the setting of underlying cardiovascular disease or other comorbidities with the risk of hypoglycemia. In overweight patients as well, we have to combine them with something which causes weight loss or use a newer analogues which have lesser effect on the weight gain. So if I ask you, because you're all, mashallah, very busy practitioners sitting over here, that if a patient comes to you and he's a diabetic for a very long time, he has been your old patient coming regularly for follow-up, and now you think it is time to start patient on insulin therapy, how many visits it takes your patients to be convinced to start insulin? So you tell them कि अब आपकी शुगर बहुत uncontrolled है, देखें आपको दवाई भी दे रहे हैं लेकिन आपका ब्लड शुगर का लेवल बहुत ज्यादा है, HbA1c 9.5 आया है, तो मेरा ख्याल है हमें आपको इंसुलिन पे शिफ्ट करना चाहिए. What is the first reaction that you get? No, डॉक्टर साहब ये नहीं है ना. So it takes at least 2 other physicians के जी इंसुलिन से बचा लें. ये डायलिसिस और इंसुलिन, इसको तो हमने हवा बनाया है ना कि ये तो पता नहीं शायद आखिरी जिंदगी का मकाम आएगा तो ये हमने. So it usually takes 2 to 3 visits at least for a patient to be convinced to start insulin. But then this raises another question. Before the patient is convinced, are you convinced yourself कि इस patient को मैंने insulin start कर देनी है? Because a lot of physicians also suffer from clinical inertia. What is clinical inertia? What is inertia? Yes, you're not ready to take that action which is required at that point in time. You know that this patient needs insulin, but you keep on saying कि चलो 1 महीना और देखते हैं, चले अगली दफा आपको देखेंगे क्या करना है. So you should be convinced, and the conviction comes from knowledge. This gives you the power to take decision, and the knowledge comes from scientific research and literature. And this scientific and research and literature reaches you through communication, which can be in the form of lectures, which can be in the form of reading an article or updating your knowledge. So once you know what is the benefit, once you have that power to take a decision, only then you will be yourself convinced. And if you are convinced, it is easier for you to convince your patients through logic and through scientific data. So we should all be convinced first ourselves so that we can convince our patients that this is the time that we have to initiate insulin. और ये जो एक सुई का डर है ना, हालांकि अब इतने मॉडर्न पेन्स आ गए हैं जिनकी इतनी बारीक सी छोटी सी सुई होती है, वेरी कन्वीनियंट, बट स्टिल ये जो इंजेक्शन और सुई का डर है,
ये हमारे दिमाग से नहीं जाता। किसी बचपन में डॉक्टर ने वो इंजेक्शन लगाया था और वो मेमोरी में हमारी कहीं फिक्स हो गया है कि दिस इज समथिंग पेनफुल एंड इट नेवर गोज अवे. So what are barriers to insulin initiation? People's perception of needles is the number one. Then cultural and logistic factors. कि नहीं डॉक्टर साहब मैं कैसे लगाऊंगी, क्या मुझे कौन लगाएगा, किधर से आएगा, इंजेक्शन कौन भरेगा, मुझे तो नजर नहीं आता, डायल यूनिट नहीं समझ आते थे, सो मेनी थिंग्स. मैं ऑफिस जाता हूँ, मैं इंसुलिन दोपहर को कैसे लगाऊंगा, फ्रिज नहीं है, बिजली बहुत जाती है, फ्रिज में कैसे रखेंगे, इकोनॉमिक, इट्स अ लिटिल बिट एक्सपेंसिव, दवाई सस्ती खिला दे हमें. Then ability of himself or caregiver to apply the injection. So these are some of the things which schedule the limit of its use. And this is a paper that I am sharing with you with the health quality life outcomes, in which they looked at the patient's perceptions and also the physician's perceptions to barriers to insulin therapy. And people who were willing to accept insulin therapy, even they had a large number of, problems or questions in their mind before initiating. They were willing, but still they thought that they can never stop insulin. Patient, मेरा इलाज ठीक नहीं हो रहा इसलिए अब मुझे इंसुलिन की जरूरत पड़ी है. They are not confident कि ये थेरेपी मुझे सही दी जा रही है. मुझे शुगर कम हो गई तो क्या करूंगा, मुझे दर्द होगी इंजेक्शन से. They still think they are willing for the injection. But let us look at those patients who are not unwilling. The ratio of these questions arising in their mind is much higher. And similarly, if we look at the perception of insulin therapy among treatment naive and experienced patients, treatment naive के जिनको पहले इंसुलिन नहीं लगी और एक वो जिनको पहले इंसुलिन लगी है, वो सोचते हैं कि जिन्हें इंसुलिन लग रही है जी मेरी बहुत एडवांस स्टेज की डिजीज है, बीमारी बहुत बढ़ गई हुई है, मैं बहुत बीमार हूँ. Then very rightly pointed about weight gain का concern होता है, इंजेक्शन का fear होता है, डायबिटीज मेरी वर्स ना हो जाए इंसुलिन के साथ. So there are so many barriers to insulin therapy from the patient's perspective, and similarly from the physician's perspective as well. We are afraid that this is going to make them gain weight. We fear that what if patient goes into hypoglycemia? What if this is painful for the patient, he just leaves it and then goes into a hyperglycemic emergency? What if patient has to, go test HbA1c and they think that this is a painful procedure to go and check because बार-बार इसके साथ हमें check करना पड़ता है. So there are barriers from the patient side as well as the physician side. Now coming on to different forms of insulin, because my topic was how, when, and then we also have to talk about some conventional and newer insulins. So there are 3 different types of insulin you can say. First is 2 basic types, and then there are different regimes. First is the basal insulins. Basal insulins, they suppress the hepatic glucose production and maintain a near normoglycemia in a fasting state. They can be long acting or intermediate acting. Intermediate acting में NPH हम use करते हैं, और जो long acting है उसमें glargine है, detamir है, degludec है, which are all analogues. Then bolus insulins. Bolus insulins are those insulins which we give to cover meals. Extra food की वजह से जो requirement है हमारी body के अंदर वो हम देते हैं. And then again, it could be a regular insulin which is short acting, or a rapid acting insulin in the form of analogues like Lispro, Aspart, and Glucine. So these are 2 major types, basal and bolus. And basal may we have intermediate and long acting. Intermediate is NPH, long acting is analogues, glargine, detamir, degludec. And in the bolus insulins, which are short acting insulins, we have regular insulins, conventional human regular insulin, or analogues in the form of Aspart. Now, this is a very easy to follow algorithm if you are initiating insulin in a patient for the first time, in a type 2 diabetic patients. So at the diagnosis, जो मैंने आपसे एक सवाल पूछा था कि कब आप इंसुलिन शुरू करेंगे, तो आपने मुझे बताया कि HbA1c से डिसाइड करेंगे. Right from the start of the patient, when oral antidiabetics fail, or when there are chronic complications and you have to have a better glycemic control. So if at diagnosis, patient's HbA1c is more than 9
His fasting blood glucose is more than 250 and random blood sugar levels of postparental glycemia is more than 300, or patient has any infection, sepsis, acute emergency like MI, unstable angina, DK. If patient is pregnant or he has undergone some surgery, then you start at the diagnosis insulin therapy in type 2 diabetic patients. But if your patient is not having these indications, then after the oral anti-diabetic fail to achieve the target, not fail to achieve the target, you start insulin therapy. If despite giving oral anti-diabetic drugs, your fasting blood sugar levels is more than 50, your plasma glucose after meals is more than 200, and your HbA1c is more than 8.5%, and your patient is already on 2 or 3 oral anti-diabetic drugs. So these are the indications by American Diabetic Association. जी वो इंडिविजुअलाइज है, उस पर भी हम अभी बात करेंगे कि किस एज ग्रुप में क्या HbA1c रखना है. So once you start the therapy with insulin, always remember, start low and go slow. Okay? So remember, start low and go slow if you are initiating for the first time. Then you have to titrate the dose, and frequent dose titration is required. But frequent dose titration is not 3 times in a day. It is after 3 days. You check the blood sugar levels and then you adjust. दे सकते हैं आप शुरू तो फैटी पेशेंट को इनिशियली तो मेटफॉर्मिन से ही स्टार्ट करते हैं ना. इट स्टिल रिमेन्स द फर्स्ट ड्रग ऑफ चॉइस. या अब हमारे पास जो एक्सपेंसिव थोड़े से एजेंट्स आ गए हैं, GLP-1 रिसेप्टर एगोनिस्ट दे सकते हैं, या SGLT2 का भी बहुत अच्छा रोल है वेट कंट्रोल के अंदर. देन यू कैन ऐड ऑन. और अगर आपको डर है वेट गेन का, एंड इफ पेशेंट इज अफोर्डिंग, यू कैन स्टार्ट ऑन एनालॉग्स व्हिच हैव लेसर वेट गेन. ठीक है जी, बिल्कुल हो जाती है. अगर आप ओरल एंटी डायबिटिक ड्रग्स की बात करेंगे तो मेटफॉर्मिन हैज द हाईएस्ट कंट्रोल ऑफ HbA1c. ओरल में मैं बता रही हूँ आपको, ठीक है. लेकिन अगर आप ओवरऑल ट्रीटमेंट की बात करेंगे तो इंसुलिन हैज द हाईएस्ट कंट्रोल. सो मेटफॉर्मिन इज स्टिल अ वेरी वेरी गुड चॉइस. ठीक है. सो सेल्फ मॉनिटरिंग ऑफ ब्लड ग्लूकोज, ये आपका फर्ज है कि मरीज को सिखा के भेजना है. Once you initiate the insulin and you do not check the blood sugar levels on your patient, say that I don't have a glucometer or I don't have the facility to get your blood sugar checked, how will you titrate your patient? You need to titrate your patient. So you need ask them to make a blood sugar profile, and it will be only possible if they know how to check their blood sugar levels at home. And then patient education remains the cornerstone of therapy of diabetes, be it in the form of lifestyle modification, exercise, weight control, diet, self-monitoring of blood glucose, or injection of insulin, how to give, where to give, when to discard the needle, how to fill the needle, how to mix the needle, what time should we give insulin, what happens if patient has hypoglycemic event, what to do now. So the patient education is the main thing that you'll be stressing upon. And now I know with very busy clinics, with a turnoff of 100 patients in your clinic, you hardly have few minutes, maybe 2 to 3 minutes to give to one patient. एक study हुई थी जो बहुत दफा कोट होती है, जिसमें कहा गया कि 1.3 शायद मिनट्स, 1 मिनट 3 सेकेंड्स एक एवरेज टाइम हम पेशेंट को देते हैं इन आवर जनरल प्रैक्टिस. सो मुझे नहीं समझ आती कि 1 मिनट में हम मरीज की हिस्ट्री भी लेके, कंप्लेंट भी सुन के, दवाई भी लिख के, उसको बता के भी क्या लेना है, कैसे भेज देते हैं. बट दिस इज अ स्टडी जो पाकिस्तान से पब्लिश हुई और बहुत सारे फोरम्स के ऊपर, इंटरनेशनल फोरम्स पर डिस्कस भी होती है. सो वी नीड टू स्पेयर सम टाइम फॉर पेशेंट एजुकेशन, एंड इफ यू डोंट हैव टाइम,
Now, many companies, pharma companies, or other NGOs, they give you support in the form of diabetes educators to your patients, or a helpline service, free, call free or toll free number in which your patients can call and get guidance. So always facilitate your patients. It's better if they hear it from the doctor's mouth, because that is more effective, because they have a relationship with you. But if you can't give time to them because of a busy schedule, please make an effort to refer them to a counselor or a helpline which can guide them how to properly take medication and lifestyle changes. So the initiation protocol by ADO has been defined into step 1, 2, 3. This is the protocol that they train their doctors on initiation of insulin. So when you are initiating an insulin, then you initiate it either bedtime, NPH से हम start करते हैं, या अगर लॉन्ग एक्टिंग है जो कि एनालॉग्स में ही सिर्फ हमारे पास अवेलेबल है, इसमें मैंने आपको बताया कि ग्लार्जीन है, डेटामेर है, रेग्लूटेक है, वो आप बेड टाइम या मॉर्निंग दोनों में दे सकते हैं, लेकिन एनपीएच को आप इवनिंग टाइम बेड टाइम पे ही देते हैं. यू स्टार्ट विद 10 यूनिट्स या फिर 0.2 यूनिट्स पर केजी के हिसाब से आप वेट के हिसाब से पेशेंट के स्टार्ट कर लें. एंड देन यू चेक फास्टिंग ग्लूकोज डेली फिंगर स्टिक से and increase the dose by 2 units every 3 days until you reach your target. And your target for fasting blood glucose is 70 to 130. And if fasting is more than 180, then you increase the dose by, instead of 2 units, you 4 units for every 3 days. And जहां hyperglycemia को देखना है, साथ ही hypo को भी देखना है. So if hypoglycemia occurs or your fasting blood glucose level is less than 70, you reduce the bedtime dosage by 4 units or 10% if your dose is more than 60 units. Okay? So this is how you initiate. NPH at bedtime, अगर long acting दे रहे हैं तो bedtime या morning time दोनों दे सकते हैं, या 10 units से start कर लें, या weight को 0.2 से multiply करके उतने units दे दीजिए. और नहीं, जब इनिशिएट करनी है इंसुलिन तो आपने गो स्टार्ट लो गो स्लो. ठीक है, अगर पेशेंट का HbA1c 10 है और आप उसको 30 यूनिट स्टार्ट कर देंगे, आपको नहीं पता कि बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड करेगी उस इंसुलिन को, और वो अगले दिन हाइपो में आ सकता है. सो यू कैन, there's no emergency. Hypoglycemia is a more serious emergency than a hyperglycemia. So start low and go slow. That is the rule. So you check HbA1c after 2 to 3 months. जाहिर है इसके साथ आप check कर रहे हैं every 3 days और titrate कर दिया. Then you don't need to check it every day. You can ask the patient to check twice or thrice in a week. And then you check an HbA1c after 3 months. And if HbA1c is less than 7%, you continue the regime. And if it is more than 7%, then you need to move to step 2. Step 2 is changing the dose. Now, changing the dose is that you have to change or increase the dose, obviously, because it is not meeting the targets. And you change the dose only if 3 readings are outside your desired target range. और वो 3 रीडिंग्स कैसे बनेंगी? जब पेशेंट सेल्फ मॉनिटरिंग ऑफ ब्लड ग्लूकोज करके फास्टिंग और पोस्ट पेरिंडियल लेवल्स चेक करके आपके पास प्रोफाइल बना के आएगा. सो यू इंक्रीमेंट देते हैं आप 10% का, या अगर हाइपोग्लाइसीमिया है तो आप उसको डिक्रीज कर सकते हैं बाय 20%. एंड देन यू रिव्यू आफ्टर 1 वीक. एंड ये नहीं कहना कि डू नॉट मिस द डोज ऑल टुगेदर, कि अगर आपकी कम आई है तो बिल्कुल बंद डोज ना लें. यू टेल देम कि इतने परसेंट 20% डिक्रीज कर लें, कुछ खा लें. Now, intensifying insulin, there can be 3 things that you can do if you are not achieving the targets. एक आपने basal insulin patient को start की हुई है, तो the second step which is called basal plus. So आप basal insulin के साथ एक bolus insulin की dosage दे देते हैं. Then 1 से control नहीं हुआ तो 2 दे देते हैं. 2 से control नहीं हुआ तो तीनों meals के साथ एक rapid acting दे देते हैं, which is called basal bolus regime. Okay, basal plus 1 with the largest meal, basal plus 2, or basal with all 3 meals, basal bolus regime. और basal plus आपने patient को दिया, patient control नहीं है, you can add a GLP-1 agonist if patient is affording,
और यू कैन स्विच द पेशेंट। वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब मुझे 4 इंजेक्शन लगाने पड़ते हैं, एक रात को लगाता हूँ, एक सुबह दोपहर शाम आपने लिख दिया है, मैं तो सारा दिन सुइयों के चक्कर में रहता हूँ। सो फॉर कन्वीनियंस यू कैन स्विच देम टू प्री मिक्स्ड इंसुलिन, जिसमें उसको 2 तरह की इंसुलिन नहीं लेनी पड़ती, एक ही तरह की लेनी पड़ती है और वो 2 दफा आराम से लगा लेता है। सो इनएडिक्वेट कंट्रोल आपने कब कहना है, ठीक है? इनएडिक्वेट कंट्रोल है तो आपने नेक्स्ट स्टेप पे मूव करना है। When HbA1c is above target, हमने टारगेट 7 रखा हुआ था, और या फिर फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज तो उसकी टारगेट पे है लेकिन HbA1c ज्यादा है, या फिर फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज एट टारगेट है लेकिन पोस्ट पेरेंडियल उसकी ज्यादा है, और अगर उसको बहुत एक्सेसिव बेजल की जरूरत है, so that means that you also need to consider intensifying the insulin therapy. अब बेजल प्लस में आपने क्या करना है? बेजल प्लस में आप पेरेंडियल इंसुलिन देते हैं विद द लार्जेस्ट मील। पेरेंडियल इंसुलिन थी बोलस इंसुलिन जो मैंने आपको बताया था, व्हिच वर शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन, जो कि रैपिड एक्टिंग एनालॉग्स भी हो सकते हैं और शॉर्ट एक्टिंग रेगुलर इंसुलिन भी हो सकती है। सो यू स्टार्ट विद 4 to 5 यूनिट्स और 10% ऑफ द बेजल विद द लार्जेस्ट मील ऑफ द डे। अगर डिनर हैवी है तो डिनर के साथ दे दे, लंच हैवी है तो लंच के साथ दे दे। और इफ HbA1c इज लेस देन 8 तो फिर आप बेजल के उतने यूनिट्स कम कर दें और उसको ऐड कर दें प्लस की फॉर्म में, और इसके साथ सल्फोनाइल यूरियास को बंद करना है आपने रैपिड एक्टिंग के साथ। एंड यू एडजस्ट वही सेम कि अगर आपकी 1 to 2 यूनिट्स इंक्रीज कर लें, या फिर अगर हाइपो हो रहा है तो आप 10 to 20% डिक्रीज कर लें। देन इज द स्टेप 2। स्टेप 2 इज अगेन इंटेंसिफाइंग द इंसुलिन। बेजल +1 था, उसके बाद बेजल +2 आ गया। अगर प्री लंच ब्लड ग्लूकोज इज आउट ऑफ रेंज तो आप रैपिड एक्टिंग ब्रेकफास्ट के ऊपर डाल दें। अगर प्री डिनर है आउट ऑफ रेंज तो फिर आप NPH एट ब्रेकफास्ट या फिर रैपिड एक्टिंग एट लंच डाल दें। और अगर प्री बेड ब्लड ग्लूकोज इज आउट ऑफ रेंज तो आप रैपिड एक्टिंग इंसुलिन एट डिनर टाइम डाल दें, ठीक है? क्योंकि थोड़ा सा टाइम लगता है ना, पिछले वाले मील के साथ आपने उसको कवर करना है। अच्छा जी, स्टेप 3। स्टेप 3 इज बेजल +2 और बेजल बोलस और प्रीमिक्स इंसुलिन। सो बेजल पे बेजल +1 था और स्टेप 3 पे बेजल +2 है, बेजल बोलस है या प्रीमिक्स इंसुलिन है। स्टेप 3 में यू चेक द प्री मील ब्लड ग्लूकोज लेवल्स, इफ दे आर आउट ऑफ रेंज तो आप उसके साथ एक रैपिड एक्टिंग इंसुलिन डाल देते हैं। एंड इफ A1c continues to be more than 7% तो फिर आप 2 hours पोस्ट पेरेंडियल ब्लड ग्लूकोज लेवल्स देखते हैं और प्री पेरेंडियल रैपिड एक्टिंग इंसुलिन को उसके हिसाब से एडजस्ट करते हैं, ठीक है? Now there are some general rules that you can apply to insulins that I am sharing with you. Obviously they have to be customized to every patient's blood sugar profile, but general rules ये हैं कि अगर आपकी बिफोर ब्रेकफास्ट शुगर कम आ रही है तो आप बेजल को 20% डिक्रीज कर दें। अगर आपकी आफ्टर मील्स ग्लूकोज लो आ रही है तो आप बोलस की डोज को 20% डिक्रीज करते हैं। अगर आपको नॉक्टर्नल हाइपोग्लाइसीमिया हो रहा है, रात के वक्त पेशेंट उठ जाता है, पसीने आते हैं, देन यू डिक्रीज द बेजल डोज बाय 20%। और जो बोलस इंसुलिन है उसके जनरल रूल्स ये है कि अगर आपकी ग्लूकोज फास्टिंग बिफोर ब्रेकफास्ट जो है वो ज्यादा आ रही है तो आप बेजल बोलस को 10% इंक्रीज करते हैं, बेजल डोज को। और अगर आपकी आफ्टर मील ज्यादा आ रही है तो आप मील टाइम को 10% इंक्रीज करते हैं। अब प्रीमिक्स्ड इंसुलिन्स। प्रीमिक्स्ड इंसुलिन्स आर अ लिटिल कन्वीनियंट इन द सेंस कि आपको 2 इंजेक्शन लगाना पड़ते हैं, ऑलरेडी मिक्स्ड फॉर्मुलेशंस होती हैं। So when you have to start a pre-mixed insulin to somebody, then you start with patient's body weight in kg divided by 2. So for example, if a patient is 60 kg of weight, then you start 30 units of insulin. And in 30 units को आपने 3 equal parts में divide कर लेना है. So 10, 10, 10, 3 equal parts हो गए. 2 parts सुबह दे देने हैं before breakfast और 1 part before dinner दे देना है. So 2/3 before breakfast and 1/3 before meal at night. So this is the way to initiate premixed insulin. और इनकी डोज टाइट्रेशन जो है वो आपने वही 10% के हिसाब से करनी है. सो अगर आपका पेशेंट 10 यूनिट्स पे है और आपने 10% इंक्रीज करनी है तो 1 यूनिट बढ़ा देंगे.
अगर आपका पेशेंट 20 यूनिट्स पे है और आपने 10% इंक्रीज करनी है तो 2 यूनिट्स बढ़ा देंगे। इसी तरह अगर हाइपो हो रहा है और आपने कम करनी है तो आप 1, 2, 3, 4 यूनिट्स अकॉर्डिंगली कम करते रहते हैं उसके। प्री मिक्स्ड इंसुलिन को जब आपने एडजस्ट करना है तो ऑब्वियसली देयर आर कॉम्बिनेशन ऑफ 2 इंसुलिन, ठीक है ना, ये इंटरमीडिएट या लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन विद अ शॉर्ट एक्टिंग और अ रैपिड एक्टिंग इंसुलिन का कॉम्बिनेशन है। सो इफ देयर इज एलिवेटेड ग्लूकोज ड्यूरिंग द नाइट और अर्ली मॉर्निंग, ठीक है, नाइट पे नॉक्टर्नल हाइपोग्लाइसीमिया है या फास्टिंग लेवल्स बहुत कम आ रहे हैं, बहुत ज्यादा आ रहे हैं, तो यू इंक्रीज द इवनिंग डोज बाय 10%। अगर आपके एलिवेटेड लेवल्स ग्लूकोज के दिन के टाइम में सारे आ रहे हैं तो आप मॉर्निंग डोज को 10% इंक्रीज कर देंगे। और अगर आपके एलिवेटेड लेवल्स सुबह शाम दोनों ही ज्यादा हैं तो देन यू इंक्रीज मॉर्निंग डोज बाय 10% एंड इंक्रीज इवनिंग डोज बाय 10%। ठीक है, सिंपल। ओके, अगर आपके प्रीमिक्स इंसुलिन लो आ रहे हैं ग्लूकोज लेवल्स तो यही है कि आपने 20% डिक्रीज कर देनी है। मॉर्निंग की डोज आप डिक्रीज करेंगे अगर आपके ड्यूरिंग द डे ज्यादा आ रहे हैं, और नाइट की डोज आप इंक्रीज करेंगे अगर अर्ली मॉर्निंग ज्यादा लेवल्स कम आ रहे हैं। इसी तरह अगर थ्रू आउट डे और नाइट पे आपको हाइपो की फीलिंग्स आ रही है तो आपने मॉर्निंग और इवनिंग दोनों की डोज 20% कम कर देंगे। अब कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनको आपने एनपीएच दी है, ठीक है, फिर पेशेंट्स कहते हैं कि डॉक्टर साहब वो सिरिंज में लगानी पड़ती है, तो मैंने सुना है कि पेन भी आ गए हैं और वो इंसुलिन नई है और वो अच्छी है। यू हैव टू शिफ्ट टू योर पेशेंट्स टू ग्लाजीन। So glargines are analog, long acting. So you're shifting from intermediate to a long acting analog. So dose जो है वो 80% of NPH आपने देनी होती है long acting के लिए। इसका एग्जाम्पल ऐसे है कि अगर पेशेंट 15 यूनिट्स ऑफ 70-30 BD ले रहा था सपोज, ठीक है, और तो इसमें 70-30 के अंदर आपकी 70 NA और 30 रैपिड एक्टिंग है, ठीक है। सो 70% NA और 30% रैपिड एक्टिंग है। तो 70% ऑफ 30 यूनिट्स को आप निकालेंगे, कैलकुलेट करेंगे और उसको 80% से मल्टीप्लाई करके उतनी डोजेज ग्लार्जीन की आप उसको दे देंगे। ग्लार्जीन की आसानी ये है कि आप इसको बेड टाइम भी दे सकते हैं और मॉर्निंग टाइम भी दे सकते हैं, प्रेफरेबली इसको भी बेड टाइम ही दे दिया जाए। अब एम इन डायबिटीज मैनेजमेंट क्या है? सो द एम इन डायबिटीज मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है कि पेशेंट का आउटकम बेटर होना चाहिए। पेशेंट का आउटकम कब बेटर होगा? जब ग्लाइसेमिक कंट्रोल अच्छा होगा, और ग्लाइसेमिक कंट्रोल अच्छा होने के साथ उसके एडेड बेनिफिट्स है, उसका स्ट्रोक का इंसिडेंस कम है, उसको हार्ट डिजीज का इंसिडेंस कम है, उसको पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज होने का इंसिडेंस कम है, ठीक है। सो इम्प्रूव पेशेंट आउटकम के लिए diabetes का treatment is not only giving insulin. There are so many other factors which are involved in it. Patient कहेगा, आप चाहेंगे कि पेशेंट का कंट्रोल भी बहुत अच्छा हो, पेशेंट सेटिस्फाइड भी हो, उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी इम्प्रूव हो, उसके बहुत पैसे भी ना खर्चा भी बहुत ना हो, उसको कोई पेन भी ना हो, उसकी कॉम्प्लिकेशंस भी मैं डिले कर लूँ, उसको हाइपोग्लाइसीमिया भी ना हो, तभी फायदा है ना, तभी पेशेंट विल बी सेटिस्फाइड एंड यू विल बी सेटिस्फाइड। और ये बहुत विशफुल थिंकिंग है कि ये सब कुछ ही हम चाहते हैं, और फिर चाहते हैं कि सस्ते में सस्ते से सस्ते में भी हो जाए, तो बड़ा मुश्किल काम हो जाता है, थोड़ी सी चीजों की कीमत होती है। सो उसके लिए यू इम्प्रूव और यू अपडेट, एंड व्हेनेवर यू अपडेट, फोन चेंज करते हैं, नया मॉडल लेते हैं, महंगा ही आता है ना, पिछले से सस्ता तो नहीं आता। सो यू इफ स्विच फ्रॉम वन ट्रीटमेंट टू अ बेटर ट्रीटमेंट, ऑब्वियसली यू हैव टू पे अ कॉस्ट, बट दैट कॉस्ट हैज टू बी वेड अगेंस्ट द कॉस्ट ऑफ वर्स ग्लाइसेमिक कंट्रोल, ठीक है ना। अगर पेशेंट को आपने नहीं इम्प्रूव किया और पेशेंट हॉस्पिटल से बार बार जा रहा है, कभी डीके के साथ जा रहा है या हाउक के साथ जा रहा है, या पेशेंट जा रहा है कि फुट के ऊपर ऐसा बन गया, हील ही नहीं हो रहा, या जा रहा है पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज के साथ, या एंजाइना हो रहा है बार बार, तो ऑब्वियसली वो हॉस्पिटलाइजेशन की सारी कॉस्ट, उसके विजिट्स फिजिशियंस और स्पेशलिस्ट को दिखाने को अगर एड ऑन करें उसके ट्रीटमेंट से, तो शायद कुछ बैलेंस हो जाता है। सो जो पेन डिवाइसेस और न्यूअर एनालॉग इंसुलिन हैं, दे आर अ बिट एक्सपेंसिव, but they improve convenience, they have the ease of use, and they have lesser side effects as compared to the conventional. So now we will be talking about the last part of my presentation today, which is conventional versus analogs. So conventional insulins तो मैंने आपको बता दी कि human insulins जिन्हें हम कहते हैं वो अलग-अलग भी मिलती हैं, वो प्रीमिक्स फॉर्म में भी मिलती हैं, जिन्हें हम बायोफिजिक इंसुलिन कहते हैं,
जिसमें 70% आपकी ह्यूमन इंसुलिन एनपीएच होती है और 30% जो है वो शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन होती है। लेकिन जो प्रीमिक्स एनालॉग्स है वो इसी की समझ लें नेक्स्ट जनरेशन है। ये भी प्री मिक्स में भी मिल जाती हैं आपको बायफेजिक एनालॉग्स, जिसमें सॉल्युबल इंसुलिन एनालॉग रैपिड एक्टिंग होता है और जो प्रोटामीन क्रिस्टलाइड इंसुलिन एनालॉग है वो आपका लॉन्गर एक्टिंग होता है। They are available in the forms of different combinations, different strengths by different companies. Common नाम आपको जो पता है उनमें आपने सुना होगा कि analogs के अंदर Novomix भी है, Humalog भी है. So these are some of the things that you come across in your daily practice. ठीक है? So इसका फायदा ये होता है कि जो pre-mixed insulin analogs हैं उसका जो 30% soluble insulin होती है, which is S part, which is short acting or rapid acting insulin, it is rapidly absorbed from the subcutaneous tissue and it covers your pharyngeal insulin requirement. और जो 70% इसका पार्ट है, that is the insulin protamine की फॉर्म में है, that is absorbed more slowly and thus addressing your basal insulin needs. So it is actually a basal +1 या basal bolus, but in one pen form or one combined solution. So premix suspensions जो हैं उसमें rapid acting insulin analog और intermediate acting protamine insulin analog combine किए होते हैं. Insulin S part which is rapid acting के साथ जो आती है वो 30 है और Novomix 30 के नाम से आपके पास अवेलेबल है और इंसुलिन लिस्प्रो जो हमारे पास शॉर्ट एक्टिंग है वो एलाई लिली वाले बनाते हैं. ह्यूमोलॉग 25, 50, 75 डिफरेंट स्ट्रेंथ्स के अंदर हमारे पास अवेलेबल होती है. कन्वेंशनल इंसुलिन हमारे पास और भी कंपनीज की अवेलेबल हैं, जिसमें आज जो गेट्स आपको स्पॉन्सर किया हुआ है उनकी भी अवेलेबल है, इंसुगेट, बेजाजीन भी उनकी अवेलेबल है, आपको पता है. सो दीज आर द सम ऑफ द कॉमनली यूज्ड प्रोडक्ट्स दैट इज इन योर क्लिनिकल प्रैक्टिस. अब जो प्रीमिक्स ह्यूमन इंसुलिन होती हैं दो कंपोनेंट्स हैं उसके, एक बेजल है और एक बोलस है. जो मैंने आपको बता दिया है कि बेजल आपका ओवरऑल कवर करता है डे को और बोलस आपकी मील्स की एक्सकर्जन्स को कवर करता है. सो बेजल का एक्शन पोटेंशियल ऐसा है कि थ्रू आउट द डे ये कवर करता है और बोलस जो है वो शॉर्ट एक्टिंग होता है, वो मील्स को कवर करता है. लेकिन जो प्रीमिक्स एनालॉग्स हैं दे हैव अ डुअल रिलीज इंसुलिन कॉन्सेप्ट. सो इसमें जो फिजियोलॉजिकल इंसुलिन की प्रोफाइल होती है जिसमें एक बेजल कंपोनेंट होता है और एक मील रिलेटेड पीक्स होती हैं जो हमारे खाने के साथ शुगर लेवल्स होता है उसके लिए रिस्पॉन्स में जो इंसुलिन रिलीज होता है ये उनको कवर करते हैं. And they have rapid acting insulin analog together with a basal insulin providing a physiological insulin requirement जो हमारी बॉडी की है उसको they meet the needs and therefore they are very close to the normal physiology of the human body and have a better efficacy. Different premix insulins और formulations को बहुत सारी studies में cover भी किया गया है. अगर मैं ये आपको आज बताना चाहूँगी तो I think हमें बहुत we will need lots of time for this because पे इतना data है और इतना काम हो रहा है. But just to give you an idea कि जो insulins प्रीमिक्स फॉर्म में हमारे पास अवेलेबल है वो फिजियोलॉजिकल इंसुलिन रिक्वायरमेंट को मैच करने की कोशिश है, जिसमें एक बेजल कंपोनेंट है और एक बोलस कंपोनेंट है. हर पेशेंट का रिस्पांस फर्क होता है, हर पेशेंट का डाइटरी पैटर्न फर्क होता है and you have to master the skill of adjusting this by checking your blood sugar profile of your patients and then adjusting and titrating the dose of these patients. लेकिन ये हमने देखा है कि ह्यूमन इंसुलिन वर्सेस जो एनालॉग इंसुलिन हैं इनको जब कंपेयर किया जाता है तो they have a better or a higher efficacy and lesser side effects as compared to the human insulins जो analogs हैं and with a lower risk of hypoglycemia in these patients. So with biphasic human insulin अगर हम इनका comparison करते हैं तो they have faster absorption, higher peak concentration, more rapid and pronounced glucose lowering effect, and duration of the action of the basal component is also matched with that of the normal physiological. इनके साथ जो आपने ख्याल रखना है वो स्पेशल पॉपुलेशंस के अंदर है. प्रेगनेंसी में इसका लिमिटेड क्लिनिकल एक्सपीरियंस है इंसुलिन एनालॉग्स का, सो यूज कॉशन से कीजिए. लैक्टेशन में देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रीटमेंट, यू कैन गिव देम. पीडियाट्रिक पॉपुलेशन में इसकी सेफ्टी ट्रायल्स नहीं है. 6 to 9 years की एज में कुछ सेफ्टी ट्रायल हैं बट दे आर ऑल्सो वेरी लिमिटेड, बट अबव 10 years of age they are safe to use.
और एल्डरली स्पेशली जो मोर देन 75 ईयर्स ऑफ एज है और जिनको आप ओरल एंटी डायबिटिक ड्रग्स भी दे रहे हैं, उनमें रिस्क ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया थोड़ा सा ज्यादा है एज कम्पेयर टू अ यंगर पॉपुलेशन, सो यू हैव टू यूज देम विद कॉशन. I will just wrap up my today's talk now with few words for you to remember and as a take-home message. And my dear colleagues, your words have power. Doctors are called opinion leaders of the society. Your patients take you as your Masiha, as Masiha. They come to you with pain. They want shifa, and they believe in you after God. And believe me, your words have power. If you tell them कि ये नहीं खाना तो वो सुनेंगे. बच्चा राख मना करता रहे कि अब्बा जी सोडे की बोतल नहीं पीने, उन्होंने कहना तेनू कुछ नहीं पता. डॉक्टर ने बताया है तो उनके ज़हन पे असर होता है. So your words have power. Give time to your patients. And remember that insulin is not a stigma. You have to convince your patients to take therapy if and when required. And there are some of the things, some of the common suggestions that I can give you, words which you can use to convince your patients. आप बताएं कि जी ये इंसुलिन तो जिस्म के अंदर ही बनती है, आपके जिस्म में थोड़ी कम है, इसलिए हम आपको बाहर से दे रहे हैं. So insulin is a natural therapy. नेचुरल थेरेपी पे लोगों का बड़ा बिलीफ होता है. कलवंजी खा लेंगे, शहद खा लेंगे, हर्बल खा लेंगे, टोटका कर लेंगे, दवाई खाते हुए उनको मसला होता है. So tell them it's a natural therapy. Insulin will improve quality of your life. This is one of the convincing evidence. Positive reinforcement कीजिए इंसुलिन देते हुए. आपका परहेज थोड़ा कम हो जाएगा, आपको लिबरल कर देंगे खाने पीने में, तो आपकी एनर्जी का लेवल बेहतर हो जाएगा, आपकी आंखें बेहतर हो जाएंगी, आपके गुर्दे का फंक्शन इंप्रूव हो जाएगा. आपको आपके जो आंखों का ऑपरेशन इतनी देर से इसलिए नहीं डॉक्टर साहब कर रहे कि आपकी शुगर कंट्रोल नहीं है, या आपके पित्ते की जो पत्थरी है उसका ऑपरेशन इसलिए नहीं कर रहे कि शुगर कंट्रोल नहीं है, आपकी सर्जरी हो जाएगी. सो गिव पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट टू योर पेशेंट्स एंड निगेट द फेटलिस्टिक एटीट्यूड टुवर्ड्स इंसुलिन कि मैं ये आखिरी हल है डॉक्टर साहब, मैं तो जिंदगी भर के लिए इंसुलिन पे पड़ जाऊंगा, अब मेरे पास कोई चारा नहीं है, कोई दवाई मेरे पे काम नहीं करी. ट्राई टू falsify these false myths. Tell them that this is to improve the quality of your life. So putting principles into practice is what we all need to do. And remember कि blood sugar level 24 घंटे के लिए किसी का कंट्रोल नहीं हो सकता. कुछ पेशेंट्स आपके पास आते हैं ना, हर आधे घंटे बाद शुगर चेक करके कहते हैं अब इतनी थी, अब इतनी थी. इसी तरह ब्लड प्रेशर का करते हैं. अभी डॉक्टर साहब 140 था, फिर 120 आ गया था, फिर घंटे बाद की 110 था, फिर जी 140 से थोड़ा सा ऊपर. So we are changing with every single moment. No, you cannot control for the entire 24 hours, and do not try to achieve this also. आपको achieve क्या करना है? एक adequate good control, and it has to be customized. जो patients ischemic heart disease के हैं, बहुत fragile हैं, बहुत weak हैं, बहुत old हैं, उनमें बहुत tight control की जरूरत नहीं होती है. Younger patients के अंदर आप better control कर सकते हैं. बहुत स्ट्रेनस एक्सरसाइज जो कर ही नहीं सकता, वो जो कहती है कि मेरे जनाब घुटने नहीं चलते, आप उसको कहते हैं कि रोज 5 मील दौड़ लगाओ, कहती है मेरे तो डॉक्टर साहब घुटने नहीं चलते, मैं तो 5 कदम नहीं चल सकती. तो रियलिस्टिक गोल्स रखिए. और डेंजरस हाइपोग्लाइसीमिया इज मोर डेंजरस. सो एल्डरली पेशेंट्स में, पेशेंट्स विद कोमॉर्बिडिटीज पे थोड़े से रिलैक्स रखें, बहुत स्ट्रिक्ट ना रहिए. एंड ये जब प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं तो काइंडली, ये मैं जूनियर कोलीग्स को ज्यादा बताती हूँ बिकॉज बहुत ट्रेंड है, इमरजेंसी से आज भी देखा तो लिख देंगे नोविडेट बीडी. अब मरीज बेचारे को नहीं पता कि बीडी क्या होता है. ट्राई टू राइट इन देयर ओन लैंग्वेज, उर्दू में बताएं कि दिन में लगानी है, 2 दफा लगाने से भी उसको समझ नहीं आनी. उसको बतानी है कि खाने से पहले इतनी देर पहले आपने यहाँ लगानी है, उसको समझा के भेजें. इंसुलिन का पूरा नाम लिखें और बताएं कि उसने पेन की फॉर्म में लेनी है, इंजेक्शन की फॉर्म में लेनी है, किस तरह लेनी है, और कटिंग करके प्रिस्क्रिप्शन पे ना लिखा करें. बहुत दफा मेरे पास पेशेंट्स आते हैं, अभी एक पेशेंट आए जिसने कोई और दवाई, किसी और दवाई के नाम से प्रिस्क्रिप्शन वाले ने पढ़ के उसको खिलाते रहे, और वो फिर देखा तो दवाई ही कोई और थी, क्योंकि डॉक्टर्स की भी हैंड राइटिंग माशाल्लाह बहुत खूबसूरत होती है हमारी. सो ट्राई नॉट टू ओवर राइट और कट. अब तो बहुत प्रिस्क्रिप्शन इस तरह भी लिखे जाते हैं जिसमें प्रिंटेड फॉर्म में आ जाते हैं, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ, सर भी इसी तरह, प्रोफेसर साजिद से ही हमने सीखा कि हम कैपिटल लेटर्स में दवाई का नाम लिखने की कोशिश करते हैं ताकि पढ़ने में गलती ना हो. जॉइंट हैंड राइटिंग में कई दफ़ा मिसरीड हो जाता है और गलत दवाई मिल जाती है.
So try to be kind to your patients. And when insulin use is imminent, go ahead and start. Don't wait. Don't wait, and be the leader, because all of you can be leaders. Thank you very much for your attention. क्वेश्चन था आपसे कि इंसुलिन हम इंजेक्ट कर रहे हैं तो जो मॉडर्न रिसर्च और जैसे हमने पूरे बॉडी में देखा है तो इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है वो उसमें हम अप्लाई कर सकते हैं और हाइपर इंसुलिनिया को हम कैसे चेक करेंगे। इंटरमिटेंट फास्टिंग के चैंपियन अभी आ रहे हैं, ये आपको बताएंगे। जितने मर्जी इंटरमिटेंट, खुद भी उन्होंने आपको एग्जांपल भी बना के दिखाया। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर सोमिया फॉर अ वंडरफुल प्रेजेंटेशन। डॉक्टर साहब हमें ऑनलाइन एक दो जो क्वेश्चंस हैं हम वो ले लें, फिर उसके बाद आप आराम से इत्मीनान से क्वेश्चंस करते रहें। डॉक्टर तारिक महमूद मियां, प्रेसिडेंट एकेडमी ऑफ फैमिली फिजिशियन और चेयरमैन ऑर्गेनाइजिंग कमेटी फैमिलीकॉन। मैं डॉक्टर सईद अहमद, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट एकेडमी ऑफ फैमिली फिजिशियन और चीफ एग्जीक्यूटिव एसोसिएशन ऑफ फैमिली फिजिशियन हूँ। मैं हूँ डॉक्टर ताहिर चौधरी, जनरल सेक्रेटरी एकेडमी ऑफ फैमिली फिजिशियंस पाकिस्तान। मैं डॉक्टर मोहम्मद अब्दुर्रहमान, सेक्रेटरी फैमिलीकॉन 2022 आपसे मुखातिब हूँ। मेरा नाम डॉक्टर अहमद नवीद भटिया जी, मैं वाइस चेयरमैन फैमिलीकॉन। मैं डॉक्टर नाहिद नदीम, पाकिस्तान एकेडमी ऑफ फैमिली फिजिशियंस की लेडी वाइस प्रेसिडेंट हूँ और लेडीज विंग की चेयरपर्सन हूँ। हर साल की तरह इस साल भी मैं आप सबको 2022 के यह सब आप प्लीज ऊपर तशरीफ लाएं। डॉक्टर सईद अहमद आप भी। तो कह रहे हैं चला दें, स्टार्ट कर दें। डॉक्टर तारिक महमूद मियां, प्रेसिडेंट एकेडमी ऑफ फैमिली फिजिशियन और चेयरमैन ऑर्गेनाइजिंग कमेटी फैमिलीकॉन। मैं डॉक्टर सईद अहमद, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट एकेडमी ऑफ फैमिली फिजिशियन और चीफ एग्जीक्यूटिव एसोसिएशन ऑफ फैमिली फिजिशियन हूँ। मैं हूँ डॉक्टर ताहिर चौधरी, जनरल सेक्रेटरी एकेडमी ऑफ फैमिली फिजिशियंस पाकिस्तान। मैं डॉक्टर मोहम्मद अब्दुर्रहमान, सेक्रेटरी फैमिलीकॉन 2022 आपसे मुखातिब हूँ। मेरा नाम डॉक्टर अहमद नवीद भटिया जी, मैं वाइस चेयरमैन फैमिलीकॉन। मैं डॉक्टर नाहिद नदीम, पाकिस्तान एकेडमी ऑफ फैमिली फिजिशियंस की लेडी वाइस प्रेसिडेंट हूँ और लेडीज विंग की चेयरपर्सन हूँ। हर साल की तरह इस साल भी मैं आप सबको 2022 के फैमिलीकॉन में खुश आमदीद कहता हूँ। फैमिलीकॉन इस दफा अक्टूबर में होने जा रही है, 27 से 30 अक्टूबर तक। हर साल की तरह ये भी इंशाल्लाह एक मेगा इवेंट होगा। इसमें पूरे पाकिस्तान से पार्टिसिपेंट्स आ रहे हैं और इसमें जिस तरह लास्ट ईयर 6,500 से ज्यादा लोगों ने पार्टिसिपेंट किया था, इस साल हम कोशिश करेंगे कि ये टारगेट हमारा 10,000 का है ऑल ओवर पाकिस्तान फैमिली फिजिशियंस, जिसमें कराची से, हैदराबाद से, पेशावर से, मीरपुर से, नवाबशाह से, KPK से, कश्मीर, गिलगित, सब इलाकों के जो फैमिली फिजिशियंस हैं उनको हमने दावत दी है। और इस दफ़ा हम इन 4 दिनों में पहले की निस्बत थोड़ा सा डिफरेंट कर रहे हैं। हम नए सब्जेक्ट्स उसमें ला रहे हैं और पूरे मुल्क से हम इनवाइट कर रहे हैं अपने फैमिली फिजिशियंस को। और इस दफ़ा आप एक चेंज देखेंगे हमारी कॉन्फ्रेंस में, जो कि पहले आज तक नहीं हुई। इसमें हम मुख्तलिफ वर्कशॉप्स करेंगे। हमारी लेडी डॉक्टर्स के पास गायनी और अल्ट्रासाउंड की वर्कशॉप है। मैं अल्ट्रासाउंड की वर्कशॉप करूंगी। इसमें हमारे माया नाज प्रोफेसर्स लाहौर और लाहौर से बाहर से भी तशरीफ लाते हैं। और अल्ट्रासाउंड की वर्कशॉप इस लिहाज से बहुत कीमती है लेडी डॉक्टर्स के लिहाज से कि उनको गायनी ऑप्स जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं वो उसमें पूछ भी सकते हैं क्वेश्चंस, और उनको हैंड्स ऑन ट्रेनिंग का मौका भी मिलता है। इन 3 दिन में हम कोशिश करेंगे कि हम आपको इतना अपग्रेड कर दें कि आप आने वाले 1 साल के लिए अगले फैमिलीकॉन तक इस तमाम जो मालूमात जो आपको वहां पहुंचाई जाएंगी, इसका फायदा अपने मरीजों को पहुंचा सकें। हमारी जो ऑफिशियल वेबसाइट है फैमिलीकॉन की www.familycon.info, आपको तमाम डिटेल्स इसके ऊपर से मिलेंगी। एब्स्ट्रैक्ट्स आपने कब तक जमा करवाने हैं, क्या उनका फॉर्मेट होगा, पोस्टर एग्जीबिशन के लिए आपने पोस्टर्स कैसे सबमिट करवाने हैं, उसका फॉर्मेट क्या होगा, और रजिस्ट्रेशन की तमाम डिटेल्स हमारी वेबसाइट पे familycon.info पे अवेलेबल हैं।
ऑनलाइन क्वेश्चन है प्रोफेसर डॉक्टर साजिद उबैदुल्ला आपके लिए. एक न्यूली डायग्नोज्ड डायबिटिक इनिशियली हाई शुगर एंड hemoglobin A1C, if treated initially with insulin for some time and sugar is controlled at that time, then orally do better. Initially undiagnosed hyperglycemia, reversibly dysfunctional beta cells, but once sugar is controlled, for some time, beta cell function is restored to good extent. Can we switch to oral then? Please comment. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. इससे पहले कि मैं इस सवाल का जवाब दूं, मेरे सामने इस वक्त मेरे टीचर, जब मैं मेडिकल कॉलेज में फर्स्ट ईयर में गया था, और सबसे पहला सब्जेक्ट जो हम सब पढ़ते हैं, आपको याद है, एनाटमी और फिजियोलॉजी. तो एनाटमी में जिस बंदे ने मेरी उंगली पकड़ी थी और मुझे उंगली पकड़ के चलना सिखाया था, he is sitting among us. And I just want to pay my tribute to my very dear and very, very sweet teacher. Sir बैठे हुए हैं. Thank you so very much, sir. Thank you so very much. Thank you. ये सवाल जो है ये बहुत ही कॉमन है और बड़ा आम सा पूछा भी जाता है, और इसका जो जवाब है वो काफ़ी हद तक तो डॉक्टर सोमिया ने आपको दे भी दिया था. असल में जो बात है वो तो ये है कि जब आपने एक इंडिकेशन के साथ इंसुलिन को शुरू किया, आपने पहले पूरा इंतज़ार कर लिया एक पेशेंट के अंदर के उसके बीटा सेल डिसफंक्शन हुए, उसको मल्टीपल ओरल ड्रग का फेलियर हुआ, और उसके बाद उस पेशेंट को अल्टीमेटली इंसुलिन स्टार्ट की गई. इंसुलिन जिस डोज पे भी स्टार्ट की, क्योंकि स्पेसिफाई नहीं किया गया. उसके बाद सवाल अब ये है कि अगर इत्तफाकन उस पेशेंट के बीटा सेल दोबारा काम करना शुरू कर दिए हैं, जिसका हमें नहीं पता कि उन्हें कैसे पता लगा कि बीटा सेल ने दोबारा काम करना शुरू कर दिया कि नहीं कर दिया, तो उस पेशेंट को हम किस तरह से वापस लेके आ सकते हैं दोबारा ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स पे. अच्छा, इसमें आप सारे लोग मेरे से इख्तलाफ भी कर सकते हैं, और चूंकि हर बंदे का अपना अपना एक्सपीरियंस है, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं है. अब मेरी एक अपनी सोच है, मेरी अपना एक ख्याल है. अगर कोई बंदा मुझे आके मजबूर करे कि आप मुझे दोबारा इंसुलिन से वापस ओरल पे लेके आएँ, पहली बात तो ये, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि वो इस बात पे एग्री कर जाए कि जितनी लो इंसुलिन पे मैं चल रहा हूँ उसी को मैं कंटिन्यू कर लूँ. फिर भी से आप एक पेशेंट को ट्वाइस अ डे इंसुलिन पे कंट्रोल आपने किया हुआ है, जो कि सबसे कॉमन, मैं बात ये इसलिए कर रहा हूँ कि सबसे कॉमन अभी भी 99% केसेस में हम लोग ट्वाइस अ डे मिक्स इंसुलिन ही देते हैं. ह्यूमलिन 30-30-70, इंसुगेट 70-30, सबसे कॉमन तकरीबन 90% ज़्यादा लोगों में ये यूज़ होती है. तो हम उसकी बात कर लेते हैं. एक सादा सा उसूल हम ज़हन में रख सकते हैं, जो मेरा अपना ख्याल है. अगर कोई मुझे बहुत ज़्यादा मजबूर करे और ना कन्विंस हो रहा हो कि आप उसको मत शुरू करें और कंटिन्यू करें विद इंसुलिन, तो मैं एक टारगेट अपना जो सेफ रखा हुआ है, इट इज़ 24 आवर्स के अंदर अगर उसकी इंसुलिन की रिक्वायरमेंट 26 यूनिट से कम हो जाती है, 26 यूनिट से अगर कम हो जाती है, तो वी कैन गिव हिम अ ट्रायल ऑफ ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स अगेन, सिर्फ उस बंदे की शदीद तरीन ख्वाहिश और फरमाइश पे. अदरवाइज मैं एग्री करूंगा डॉक्टर सोमिया से, और मेरे ख्याल है हमारे सारे के सारे कोलीग इस पे एग्री करते हैं कि आपने एक बंदे को अगर इंसुलिन पे डाल दिया है तो एडजस्ट हिम ऑन इंसुलिन, कीप हिम ऑन इंसुलिन. क्योंकि अभी हम सब ने सुना कि इंसुलिन का फायदा सिर्फ और सिर्फ शुगर कंट्रोल करना नहीं है, बट इट इज़ मच मच बियॉन्ड दैट. लेकिन फिर भी अगर कोई बंदा बहुत शदीद मजबूर करे और दिल ना भी चाह रहा हो, तो प्रोबेबली दिस इज द रेंज
स्टार्ट कर दी, क्योंकि प्रॉब्ली वजह ये थी कि ग्लूकोटॉक्सिसिटी से उसके बीटा सेल जो थे वो डिसफंक्शनल हो चुके थे। लेकिन वो कुछ अरसे के बाद आप नोट करेंगे कि उसकी शुगर वाकई नीचे आ जाएगी, एंड देन यू कैन गिव हिम अ ट्रायल ऑफ ओरल हाइपोग्लाइसीमिक्स। लेकिन मैंने अपने पेशेंट्स में ऐसे भी देखा है जो हमारे क्लिनिक में 500 एंड अबव आए, और मैंने शायद गलती से अच्छाई में उनको सिर्फ मेटफॉर्मिन दी, और वो भी थेराप्यूटिकली एडिक्वेट डोज में दी, एंड वो सरप्राइज टू सी कि विद इन 48 आवर्स उनका आधा से भी नीचे चला गया था। और एक को तो मैं परेशान हो गया, देखा कि इतनी ज्यादा उसकी चली गई थी, हंड्रेड्स में आ गई थी, कि मैं हैरान रह गया कि सिर्फ मेटफॉर्मिन डिड द मैजिक। तो हम लोग इंसुलिन रेजिस्टेंस को तो टारगेट इतना ठीक है। अब ये मैं भी ये पूछना चाहता हूँ कि हाइपरग्लाइसीम, ये जो टाइप 2 डायबिटीज है, इज इट एज ए हाइपर इंसुलिनिमिक स्टेट? तो फिर भी आप हम इंसुलिन दे रहे होते हैं, उसको दे रहे होते हैं, तो उसके आगे जो इंसुलिन बढ़ा रहे हैं क्योंकि इंसुलिन अंदर जा नहीं रही, उसके लिए फिर आप इंसुलिन की क्या करना चाहिए? मतलब एक हाइपर इंसुलिनिक स्टेट को कवर करने के लिए आप मोर इंसुलिन एडमिनिस्टर कर रहे हैं, तो क्या रैशनल है इसका? कोई रैशनल नहीं। In one of your slides, Dr. Somia, that states that beyond glycemic control, insulin also leads to the reduction in insulin resistance. Okay. My question is, it is basically the hyperinsulinemia which caused insulin resistance in that patient. How that very thing which caused the problem will solve the problem? He or she is insulin resistant due to the hyperinsulinemia. So when we give insulin from outside, how can it bring down the insulin resistance? It's not only the level of the insulin which contributes to insulin resistance. There are so many other factors. Receptor level के भी issues होते हैं, insulin की quality का भी issue होता है, and then the overall environment also reduces your insulin resistance. जब आप पेशेंट को साथ बता रहे हैं कि वेट कंट्रोल भी करना है, जब आप उसको बता रहे हैं कि एक्सरसाइज भी करनी है, जब आप उसको बता रहे हैं लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन भी करनी है, तो वो भी ओवरऑल आपके इंसुलिन रेजिस्टेंस को इम्प्रूव करना पड़ता है। और दूसरा, जो इंडोजिनस इंसुलिन प्रोड्यूस होती है, जो एक्सोजिनस इंसुलिन प्रोड्यूस हम दे रहे होते हैं, दे आर नॉट 100% सेम. So this is something which is analog to try to mimic the insulin which is produced in the body, but this is not the same insulin. Human analogues की अगर आप बात करें, मैंने analogues के साथ कहा कि वो insulin resistance को भी कम करता है. But overall, insulin goes to super physiological level when we give exogenous insulin. So my question is, in a patient who is already swimming in the sea of insulin, when we give exogenous insulin, push it to the super physiological level, and that was the same which was studied in Accord trial. Initially ये ख्याल था कि Accord trial में लोग इसलिए मरे हैं कि हमने HbA1c बहुत नीचे ले गए थे. बाद में जब अब उसको दोबारा से रीएनालाइज किया गया तो पता चला the cause of death was not the low HbA1c, that was the insulin, because insulin increases the cardiovascular mortality 3 folds in the patient, especially if he or she is old and is already hyperinsulinemic. And on one side, we are just forcing on the patient to bring down the weight reduction. And how is it possible that in the presence of insulin, which is a storage hormone, how can we bring the weight down in the presence of super physiological amounts of insulin? That's what I am trying to tell you. It is not only the insulin which is the sole treatment that you are offering to your patient. You don't tell your patient कि आपने इंसुलिन लगानी है, बाकी कुछ नहीं करना. So वो बैलेंस हो रहा होता है. जब आप उसको साथ डाइट भी रिस्ट्रिक्ट कर रहे होते हैं, जब आप उसको साथ एक्सरसाइज भी बता रहे होते हैं, तो वो आपके इंसुलिन रेजिस्टेंस को पेरिफेरल लेवल के ऊपर कम कर रहा होता है, आपके रिसेप्टर्स की आप रेगुलेशन कर रहा होता है. So इंसुलिन रेजिस्टेंस क्यों डेवलप हो रहा है? इंसुलिन रेजिस्टेंस इसीलिए डेवलप हो रहा है कि जो इंसुलिन आपकी बॉडी में प्रोड्यूस हुई है वो आपके मसल सेल्स के अंदर नहीं जा रही. यही रीजन है. मसल सेल्स के अंदर जाने का क्या तरीका है? रिसेप्टर्स के थ्रू.
आप रिसेप्टर्स की आप रेगुलेशन हो रही है, जब आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, जब आप डाइट बता रहे हैं तो आपके आप रेगुलेशन हो रही है। सो इंसुलिन अगर आप एक तरफ से दे रहे हैं, दूसरी तरफ से आप इंसुलिन रेजिस्टेंस को कंट्रोल भी कर रहे हैं। सिर्फ इंसुलिन मैकेनिज्म नहीं है डायबिटीज के होने का, देयर आर सो मेनी कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म्स। उसमें वेस्कुलर एंडोथेलियम भी इन्वॉल्व है, उसके अंदर लिपोटॉक्सिसिटी भी इन्वॉल्व है, उसके अंदर प्लेटलेट डिस्फंक्शन भी इन्वॉल्व है। सो ओवरऑल जो बेनिफिट हो रहा होता है पेशेंट को, और जो हाई ग्लाइसीमिया, थोड़ा ऐसा तो नहीं होता कि 100% जो इंसुलिन आप दे रहे हैं वो काम ही नहीं कर रही। देयर इज अ सम लेवल ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस एंड सम ऑफ द इंसुलिन इज वर्किंग। दिस इज नॉट कि अगर आपने 10 यूनिट इंसुलिन के इस पेशेंट को लगाया है तो 10 के 10 यूनिट काम नहीं कर रहे, उनमें से शायद 5 यूनिट काम कर रहे हैं शुगर लेवल को कम करने के लिए, लेकिन 5 यूनिट काम नहीं कर रहे। सो इट इज नॉट कि अगर आप इंसुलिन देते रहेंगे, देयर आर सो मेनी अदर मैकेनिज्म्स। तो जो आप हाइपरग्लाइसीमिया को, कुछ शुगर लेवल्स को कंट्रोल कर रहे हैं, वो भी कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं पेशेंट की ओवरऑल हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए। ऑब्वियसली ये बहुत डिबेटेबल टॉपिक है और बहुत सारी नई थ्योरीज भी आई हैं, और इसीलिए जीएलपी रिसेप्टर एगोनिस्ट ने अपनी जगह भी इसके अंदर बना ली है। एक्चुअली आपने चूंकि छोटा सी बात कर दूं, हर बंदा जो कि टाइप 2 है उसके अंदर हाइपर इंसुलिनीमिया नहीं भी है। ये आप सिर्फ एक उस सेट की बात कर रहे हैं जिसका आपने जिक्र किया, जिसके अंदर हाइपर इंसुलिनीमिया मौजूद है, और उसके बारे में आप पूछ रहे हैं, बात कर रहे हैं कि उनमें इंसुलिन रेजिस्टेंस कैसे कम होगी। बहुत सारे ऐसे भी तो हैं जिनके अंदर अल्टीमेटली एग्जॉस्ट हो चुके हैं और अंदर उनके इंसुलिन के लेवल हैं ही कोई नहीं। उन लोगों के अंदर अब अगर आप इंसुलिन देते हो तो उसका एडवांटेज है, लेकिन एक वो छोटा सा सबसेट जिसके अंदर हाइपर इंसुलिनीमिया है और इंसुलिन रेजिस्टेंस चल रही है, उनके अंदर देयर इज डेफिनेटली सम। एक्चुअली इस क्वेश्चन का मतलब ये था कि क्योंकि हमारे बहुत सारे ऑडियंस जो है ना वो थोड़ा सा इस पे कंफ्यूज फील करेंगे, क्योंकि आप पिछले हमारे जो मॉड्यूल्स हैं उसमें आप आई नहीं, तो हमने इस पे इंसुलिन रेजिस्टेंस पे काफी जो पे किया था। दैट वाज अ वंडरफुल प्रेजेंटेशन। ये उन लोगों के लिए मैं यहाँ पे ये बात क्लैरिफाई कर रहा हूँ, just to being a spokesperson on the part of Dr. Somia, कि insulin is also an important tool in our armamentarium। तो इसको लगाना किस तरह से, किस में लगाना है, वो उन्होंने एक वंडरफुल बेहतरीन तरीके से आपको बताया। अब ये कहाँ लगाना कहाँ नहीं लगाना ये आपकी ओन डिस्क्रिप्शंस के ऊपर है। अगर आप ये समझते हैं कि पेशेंट हाइपर इंसुलिनीमिक है तो डजंट मेक सेंस, लेकिन अगर जैसे प्रोफेसर साहब ने कहा कि ऐसा सबसेट ऑफ पेशेंट है जो कि थिन लीन और वो विजिबली हमें नजर आ रहा है कि दे आर suffering with pancreatic beta cell dysfunction, so here insulin is just a miracle। How do you measure? Sir, insulin, this is so much disrespect to the insulin which has come to this level। We have come to this level। हमारा पेशेंट इंसुलिन पे इसीलिए जाता है कि हम right from the onset we are so much looking at the disease through the lens of glucose only। We have so much disrespect for the insulin, we never check the insulin levels, and if we make a habit of checking the insulin levels or at least HDL triglyceride ratio, then we would be able to ascertain that 99% of type 2 diabetic patients are hyperinsulinemic। You will see। और अगर उसमें हम इंसुलिन लेवल को वहीं से कट डाउन करें विद लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस, वी कैन डू वंडर्स। और मैं इसको रिपीट कर दूं जैसे पिछला हमने मॉड्यूल किया था, इंसुलिन रेजिस्टेंस आर बेसिकली टू साइड्स ऑफ अ कॉइन। हम एक साइड को देखते हैं हाइपर इंसुलिनीमिया, insulin resistance, that it is not working at the level of the fat cells or at the level of the muscle cells। Some cells of the body, they remain insulin sensitive throughout the life। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, like theca cells of the ovaries, like the fat cells around your butts and hips, they are perfectly the cells which are insulin sensitive throughout the life। अच्छा, अब सेकंड जो पोर्शन है वो है हाइपर इंसुलिनीमिया। जब इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है तो उसको काउंटर करने के लिए मजीद इंसुलिन पैंक्रियाटिक बीटा सेल से स्क्रीट होती है। दिस इज बेसिकली द हाइपर इंसुलिनीमिक पार्ट व्हिच कॉजेस टू द 8 metabolic disorders which chew up 75% of the medical health budget। These are diabetes, hypertension, dyslipidemia, non-alcoholic fatty liver disease, अल्जाइमर डिजीज, पीसीओस, डिमेंशिया। ये 8 डिजीजेस हैं
जो कि हाइपर इंसुलिनीमिया से हो रही है, इंसुलिन रेजिस्टेंस से नहीं हो रही। सो ये दोनों पार्ट, और हम जो हाइपर इंसुलिनिमिक पार्ट है उसको हमेशा ओवरलुक कर देते हैं, और ये हाइपर इंसुलिनीमिया है जिसकी वजह से ये पूरा सबसेट ऑफ 8 डिजीजेज जिसको 75% मेडिकल बजट चाहिए होता है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम कह रहा हूं जी। तो इसलिए हमें दोनों रुख पे देखना है। अगर हमें हम एक साइड पे पेशेंट को कह रहे होते हैं कि जी आप अपना वजन कम करो, वजन कम करो, एंड ऑन द सेम साइड we are starting with 8 units, 8 to 10, 10 to 15, 20. We have seen the patients with 200, 300 units of insulin, and they are still not controlled. You know, और मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है प्रोफेसर जावेद अकरम साहब, मेरे ज़हन पे अल्फाज हैं, अभी तक उन्होंने कहा था, a patient who is not responding to high dose of insulin is probably not the patient of insulin. अच्छा, दूसरी ये बात कि इंसुलिन रेजिस्टेंस को अगर आपने देखना है तो आप इंसुलिन लेवल से बेहतर होमा आईआर लेवल्स करा रहे हैं जी, वो दे आर अ बेटर इंडिकेटर टू टेल यू इफ यू आर इंसुलिन रेजिस्टेंट, एंड इट इज फ्रीली अवेलेबल इन ऑल द उसमें भी फास्टिंग इंसुलिन फिर करवानी पड़ेगी, होमा आईआर के लिए भी इंसुलिन साथ चाहिए। रेशो निकालेंगे। दो चीजें करानी पड़ती हैं, फास्टिंग सीरम इंसुलिन और फास्टिंग ब्लड शुगर। उन दोनों को आप उसका कैलकुलेटर आप अपने निकालेंगे ना, उसमें डाल देंगे तो निकल आएगा, उसमें फिगर्स निकल आते हैं। इंसुलिन तब भी करानी पड़ेगी, लेकिन इंसुलिन होमा आईआर से भी बेटर प्रिडिक्टर जो है, जो मेटाबॉलिज्म के प्रोफेसर हैं वर्ल्ड ओवर, वो कहते हैं कि एचडीएल ट्राइग्लिसराइड रेशियो, दैट इज द मोर इंपॉर्टेंट एंड मोर स्पेसिफिक टेस्ट। अगर ये 1.5 से नीचे है तो आप इंसुलिन सेंसिटिव है, 1.5 से ज्यादा है तो यू आर इंसुलिन रेजिस्टेंट, और अगर ये 3 से ज्यादा है आइदर यू आर ऑलरेडी डायबिटिक और एट द वर्ज ऑफ डायबिटीज। सेकंड क्वेश्चन ऑनलाइन, एक क्वेश्चन है सिर्फ रह गया, वो उसके बाद आपकी बारी। ये डॉक्टर खुरम वहीद का क्वेश्चन है डॉक्टर अरशद शूद आपके लिए। एक न्यूली डायग्नोज्ड पेशेंट 26 years old with very high hemoglobin A1C 12, should we start insulin or oral medicine? पहले वाला ही सवाल है मेरे ख्याल में, अगर वो ओरल से फेल हो चुका है, 2 ड्रग्स ट्राई कर ली, आपने अपने पेशेंट्स को किया है ना कंट्रोल, इसलिए वो हाई वाला। ये वही सवाल है कि शुरू में इतना। अब डॉक्टर फरूक आप क्वेश्चन कर लें। There is one question, please. Hello. डॉक्टर ताहिर चौधरी। डॉन फिनोमेना बेसिकली जो है ना जी, ये हम सब में होता है। डॉन फिनोमेना इज नॉट बेसिकली पैथोलॉजिकल। डॉन फिनोमेना को अगर हमने आसान जुबान में समझना तो इस तरह से समझ लें कि जब आप सारी रात सो चुके होते हैं, सुबह अर्ली मॉर्निंग आपकी बॉडी आपको एट दिस टाइम ऑफ सनसेट, आपकी बॉडी आपको तैयार कर रही होती है फॉर द नेक्स्ट कमिंग डे, सनराइज के करीब ना, सॉरी सनसेट नहीं सनराइज, तो वो आपको तैयार कर रही होती है कि आपको उठने के लिए। आपने अक्सर देखा होगा कि अक्सर लोग कहते हैं जी सुबह फास्टिंग इंसुलिन मेरी ज्यादा आती है। उसकी रीजन क्या है कि एज ए फास्टिंग शुगर सॉरी ज्यादा आती है। वो इसलिए ज्यादा आती है कि आपकी बॉडी आपको तैयार कर रही होती है फॉर द नेक्स्ट कमिंग डे, और वो आपको एक एनर्जी आपको बेड से उठने से पहले प्रोवाइड कर रही होती है। तो डॉन फिनोमेना इज नॉट अ बैड थिंग एट ऑल, लेकिन इसमें भी हम क्या गलती करते हैं? हम गलती ये करते हैं, हमारा पेशेंट है, हम उसको देख रहे हैं कि उसकी HbA1c भी नॉर्मल आ रहा है, और पेशेंट कहता है डॉक्टर साहब पोस्ट प्रेंडियल तो बहुत अच्छी है लेकिन फास्टिंग नॉर्मल नहीं होती, एंड वी अननेसेसरीली पुट दैट पेशेंट ऑन द बेसल इंसुलिन कि यार तुम्हारी बेसल इंसुलिन मैंने कंट्रोल करके छोड़नी है, हालांकि वो डॉन फिनोमिना है। अगर आपके पेशेंट का HbA1c विद इन टारगेट रेंज है और अगर उसका फास्टिंग लेवल फिर भी थोड़ा ज्यादा आ रहा है तो इट इज अ रिजल्ट ऑफ डॉन फिनोमिना, जो कि आपको आने वाले दिन के लिए तैयार कर रहा होता है। और ये नॉन डायबिटिक के अंदर भी होता है। इट्स बेसिकली अ गुड थिंग नॉट अ बैड थिंग। अगर इसके अंदर ये भी है कि डॉन फिनोमेनन में कि सुबह के वक्त कॉर्टिसोल और ग्रोथ हार्मोन की प्रोडक्शन हो रही होती है और ये दोनों इंक्रीज करती हैं। इसके अलावा हेपेटिक रिलीज तो है ही अपनी जगह, तो ये सब चीज़ें करती हैं। बाकी वो जो एक सवाल था वो 12% वाला, एडीए की रिकमेंडेशन तो यही है कि 9% इज एंड अबव इंसुलिन लेनी है आपको, इस तरह का है। ये आपका नहीं था, ये पिछले वाले सवाल था। सोमोजाई तो है बेसिकली, दिस इज सीन यूजुअली इन टाइप 1s।
Somojai is basically seen in type 1 diabetics. Type 1 में पहले हाइपो हुआ होता है, उससे फिर हाइपर। अच्छा आप इस पे नहीं सोमोजाई जो है ना बेसिकली ये टाइप 1 जो कि इंसुलिन के ऊपर है, और इसमें हम फिर वही गलती करते हैं कि यहाँ पे हम रात वाली इंसुलिन उसकी जब देखते हैं ना फास्टिंग ज्यादा बढ़ा देते हैं, यहाँ पे इंसुलिन को कम करना है। सोमिया डॉक्टर ये रीबाउंड है ना, हाइपो के बाद ही है, तो इसके अंदर आप अगर इंसुलिन बढ़ाएंगे तो पेशेंट को और होगा इस तो पे इसलिए कम करनी आपने है इसको इंसुलिन को कम कर दिया। उसमें आपके पास हाइपो फॉलोड बाय हाइपर आएगा, जबकि इसके अंदर जो पेशेंट है वो सिर्फ आपके पास इम्पेयर्ड फास्टिंग लेवल्स के साथ है। अगर आप मेरे ख्याल में रात के 3 बजे उसको उठा के चेक करेंगे, अगर वो हाइपो में गया हुआ है तो वो आपका सोमोगाई इफेक्ट है, और आपको इसमें रात की इंसुलिन डिक्रीज करनी है तभी जाके वो कवर होगा। ये डॉक्टर साहब आप क्वेश्चन। मेरा क्वेश्चन है, मैंने बताया था कि अगर आपने इंक्रीमेंट करना है तो आपने 10% करना है अगर आप अबव टारगेट है, और अगर आपने डिक्रीज करना है तो 20%। ओल्डर एडल्ट में हाइपोग्लाइसीमिया को हम ओवर करेक्ट करते हैं क्योंकि उनके अंदर हाइपोग्लाइसीमिया जाने के चांसेस ज्यादा ड्रेडफुल हो सकते हैं, इसलिए हमेशा हाइपो यंग और एडल्ट में हो दोनों में ही करेक्ट आपने करना है बाय डिक्रीजिंग द डोज बाय 20%। लेकिन ओल्डर एज में आप ज्यादा कॉशियस रहते हैं और ज्यादा लिबरल रहते हैं कि पेशेंट इतना स्ट्रिक्टली कंट्रोल ना भी हो तो आप उसको रिलैक्स कर देते हैं और उसका HbA1c 6.5 के टारगेट पे नहीं रखते, 7 से अबव रखते हैं। जहाँ तक मुझे पता है करेक्शन फैक्टर आप अप्लाई करते हैं जब आप देखते हैं कि प्री मील आपकी काफ़ी ज़्यादा आ रही है तो 1 यूनिट शुड कवर अबाउट 50 मिलीग्राम्स ऑफ ग्लूकोज। यस, इसके अलावा और ये दूसरा जो है करने लगे तो ये बहुत सारी करेक्शन डोज जो है ना जी, करेक्शन डोज हमेशा बोलस की दी जाती है, बेजल की नहीं दी जाती, नंबर 1। और करेक्शन डोज देने के लिए ये जरूरी है कि आपका पेशेंट इतना एजुकेटेड अनफ हो तो उसको कार्ब काउंटिंग आती है। अब आप कह रहे हैं कि ये करेक्शन फैक्टर 115 ग्राम को करता है, आपको क्या पता है कि जो आपने खाना खाया उसमें 15 ग्राम है कि 15.10 ग्राम है कि 20 ग्राम है? हाउ विल यू कैलकुलेट डाइट? आपको लगता है कि जो डाइट आप बता रहे हैं पेशेंट 100% वो फॉलो कर रहा है? देखिए जो बुक की नॉलेज होती है ना, जो कि 1 + 1 = 2, that doesn't always apply on a patient because every patient's body and metabolism is different from the other one. एक पेशेंट जिसके आप 2 यूनिट्स इंसुलिन के कम करते हैं, हो सकता है उसके साथ उसके 20 मिलीग्राम्स पर डेसीलीटर कम हो जाती हो शुगर, और ऐसा भी हो सकता है कि उसी 2 यूनिट्स की रिडक्शन से किसी पेशेंट के 35 कम हो जाते हो। सो इट डिपेंड्स ऑन अ लॉट ऑफ फैक्टर्स। पेशेंट की प्रोफाइल क्या है, उसकी डाइटरी इनटेक कैसी है, उसने कितनी देर पहले इंसुलिन लगाई थी। सो देयर आर जनरल गाइडलाइंस बट देयर आर नो फिक्स्ड कि इतना होगा तो ये हो जाएगा। दिस इज नॉट जी इंसुलिन तो कार्ब रेशो वगैरह इस तरह की भी चीजें भी होती हैं, फिर इसमें बहुत सारे रूल्स भी हैं। रूल ऑफ 500 है, 1500 है, 1800 है, 450 छोटे बच्चों के लिए होता है, ये डिफरेंट चीजें हैं। एंड इंसुलिन मैं एक समझता हूँ कि डायबिटीज में जितने भी आपकी गाइडलाइंस हैं ये गाइडलाइंस ही हैं। आपने जो समझते हैं बेहतर, ये कोई कहीं नहीं लिखा हुआ कि इंसुलिन जो है अभी करो, देर से करो। यू कैन जब मर्जी जिस चीज से तुम ट्रीट करना चाहो करो, ट्रीट टू टारगेट व्हाटएवर यू आर यूजिंग। थैंक यू। माय नेम इज डॉक्टर समी। 2 पॉइंट्स पे मैंने ना इस पे ऐड ऑन करना है, जो बातें हो चुकी हैं। सर ताहिर साहब की बात बिल्कुल ठीक है कि इंसुलिन सेंसिटाइजेशन और जो है इंसुलिन रेजिस्टेंस द बेसिक इशू। सो आई डोंट थिंक इट्स वाइज टू यूज इंसुलिन एज अ सोल थेरेपी इन टाइप 2 डायबिटीज मेलिटस। लेकिन हो रहा है पाकिस्तान में कि आपको पर्चियाँ मिलेंगी या आपको मरीज बताएंगे कि हम पहले ग्लूकोफेज खाते थे, फिर हम इंसुलिन पे गए, हमने ग्लूकोफेज बंद कर दी। मेरी राय में कि सिनर्जिज्म है ना, दैट्स द बेस्ट कॉम्बिनेशन कि आप एक इंसुलिन सेंसिटाइजर जरूर साथ रखें इंसुलिन के, तो इफेक्ट मैंडेटरी। यहाँ तक तो मैं एब्सोल्यूट सर से एग्री करता हूँ क्योंकि ये हो रहा है, मिस्टेक हो रही है बहुत ज्यादा। सेकंड पॉइंट जो सर कह रहे हैं कि हाइपर इंसुलिनीमिया में इंसुलिन यूज क्यों की जाए, उसमें मेरा एक ओपिनियन है, मे बी रॉन्ग, सीनियर्स भी बैठे हैं, कि मेरा अपना ख्याल है कि टाइप अगर आपका इंसुलिन लेवल नॉर्मल लोगों से ज्यादा भी है, स्टिल ए पेशेंट कैन बी इंसुलिन डेफिशिएंट ड्यू टू रेजिस्टेंस। दिस इज कॉल्ड ए रेडिटिव डेफिशिएंसी, नॉट एब्सोल्यूट डेफिशिएंसी।
तो एक पॉइंट ये हो सकता है जो आप कह रहे हैं कि हम हाइपर इंसुलिन पर क्यों इंसुलिन लगाते हैं कि उससे पेशेंट को बेनिफिट भी होता है। तो मे बी एक पेशेंट अगर 800% इंसुलिन रिक्वायरमेंट पे चला गया था, विद एज बीटा सेल एग्जॉस्ट हुए वो 400% पे आ गया हुआ है, लेकिन इंसुलिन इतनी नहीं जितनी 10 साल पहले बन रही थी। तो ये पॉइंट हो सकता है कि हमें इंसुलिन देनी पड़ती है इवन हाइपर इंसुलिन ऊपर भी, कोई हमें नहीं पता उसकी रेजिस्टेंस का लेवल कितना ज्यादा है, उसे कितने टाइम्स नॉर्मल इंसुलिन बॉडी में रखनी है अपने सेल्स को ग्लूकोज पहुंचाने के लिए अंदर। तो ये एक मेरी ओपिनियन है, इस पे कोई कमेंट और भी कर सकते हैं आप। थैंक यू। अच्छा, आपके दो सवाल थे। एक तो ये था कि इट इज एब्सोल्युटली अ गुड टेक होम मैसेज दैट इंसुलिन should never be used alone in type 2 diabetes. We need insulin sensitizers, and sensitizers are two. One is metformin and the other TZDs. Never try to combine insulin with TZDs. आपका वेट गेन ऐसा सिनर्जिस्टिक इफेक्ट होगा कि आप पहचानेंगे नहीं जब 3 माह बाद पेशेंट एंटर होगा। So never combine insulin in majority of the cases. Never try to combine with TZDs. It is always combined with metformin. अब सवाल ये था कि पैंक्रियाटिक बीटा सेल फेलियर का, देयर इज स्टडीज गोइंग ऑन यहाँ पे बर्मिंघम इंग्लैंड में, वहां पे अभी भी है काउंटर पॉइंट स्टडी, आप जाके आज उसको पढ़िएगा, इट इज स्टिल ऑन गोइंग। काउंटर पॉइंट स्टडी में ये बात बिल्कुल गलत साबित हो चुकी है कि पैंक्रियाटिक बीटा सेल्स डाई अवे। उस स्टडी में ये बात देखी गई है कि ये जो इंसुलिन रेजिस्टेंस का इफेक्ट स्टार्ट हुआ एट द लेवल ऑफ द लिवर, मैंने पिछली दफा जब इंसुलिन उस पर बात की थी तो सीक्वेंस बताया था, इंसुलिन रेजिस्टेंस स्टार्ट्स एट द लिवर, देन इट गोज टू द फैट सेल्स, फ्रॉम देयर इट गोज टू द पैंक्रियाटिक बीटा सेल्स. Those pancreatic beta cells are basically clogged with the fat, just like fatty liver disease. So whenever you bring their triglyceride level down, you stop the process of de novo lipogenesis at the level of the liver. When you start shredding off the fat from the liver, then it comes out of the fat cell, and then similarly out of the pancreatic beta cells, and majority of the pancreatic beta cells, they restore their function. So जो पुराना हमें यूकेपीडीएस ने ये एक सबक पढ़ाया था, जैसे अभी बार बार ये क्वेश्चन हो रहा था कि हम पैंक्रियाटिक बीटा सेल को कैसे जज कर सकते हैं जी, कि वो हमें जो एक क्रूड सबक यूकेपीडीएस ने पढ़ाया था कि 50% of the pancreatic beta cells are lost at the day of diagnosis, and this loss continues at the rate of 4 to 6% yearly thereafter. It is absolutely fictitious now. You can restore the pancreatic beta cell function if your patient has not already exhausted those beta cell functions with the long-standing diabetes, like 30 years, 40 years, not taking care of diabetes. If you take care, you can rejuvenate the functions of pancreatic beta cells. Counterpoint study and direct trial. You go and study, you will see the results. Yes, and although reluctantly, अब तो एडीए ने भी 2022 की गाइडलाइंस के अंदर डायबिटीज रिमिशन की कट ऑफ आपको दे दी 6.5 if you stay with that for less than 3 months, for more than 3 months without medicine, you are in a remission. पहले तो ये मानते ही नहीं थे, अब अगर इन्होंने रिलक्टेंटली रिमिशन, बट दुनिया में जो मेटाबॉलिक डिजीजेस के गुरुज हैं, लाइक प्रोफेसर बेंजामिन रिकमैन, प्रोफेसर रॉब लस्टिंग, प्रोफेसर जेसन फंग, वो ये कहते हैं कि यू कैन रिवर्स डायबिटीज इन एनी ऑफ द पेशेंट एट एनी ऑफ द टाइम बाय लो कार्ब. Although it is not just the low carb, but it is the mainstay of the treatment, frequency of eating and low carbs. You can reverse diabetes. अभी दुनिया में तो ये हो रहा है, और अब आहिस्ता आहिस्ता इंटरनेशनल गाइडलाइंस जो हैं वो इसकी तरफ माइल हो रही हैं. साजिद साहब इसमें तो हमने ऑलरेडी आपका नाम दे दिया हुआ है, ताहिर रिवर्सल ऑफ डायबिटीज ऑलरेडी हम दे दिया हुआ है. नाम लेके बता रहा हूं. Questions हो गए. I am highly thankful to our worthy speaker. In the previous CMEs, lot of emphasis was laid upon this early insulinization. Yes. What is that concept? Even without the oral anti-diabetics, what is this concept? Early insulinization to start without starting prior, having the prior to the oral diabetics, anti-diabetics. देखिए, अर्ली इंसुलिनाइजेशन का मतलब ये है कि व्हेन
your blood sugar levels are so high that they are causing glucotoxicity, lipotoxicity, end organ damage, and worsening your future outcome. मैंने जो आपसे बात की थी मेटाबॉलिक मेमोरी और लेगेसी इफेक्ट की, वो ये थी कि जब आप इंटेंसिव कंट्रोल कर लेते हैं इनिशियली, तो आप बाद में इतना इंटेंसिव कंट्रोल नहीं भी कर देते तो वो मेमोरी में रह जाता है बॉडी की कि इतना अच्छा कंट्रोल था और उसके लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स हैं. सो जो इनिशिएशन जिन पेशेंट्स में एज अ फर्स्ट लाइन आप इंसुलिन शुरू कर लेते हैं एट द टाइम ऑफ डायग्नोसिस, जिनका बहुत ज़्यादा हाइपरग्लाइसीमिया है, HbA1c 9 से ज़्यादा है, 300 से ब्लड शुगर लेवल ज़्यादा है, वो आप बेनिफिट लेना चाहते हैं उस लेगेसी इफेक्ट और मेटाबॉलिक मेमोरी का. इनिशियल जो बहुत टाइट और अच्छा कंट्रोल है वो 10 साल बाद भी मरीज को बेनिफिट देता है. बेशक आप उस 10 साल बाद उसको इतना टाइट कंट्रोल नहीं दे रहे हैं, आप उसको दोबारा ओरल एंटी डायबिटिक्स पे शिफ्ट भी कर सकते हैं, लेकिन एक जो ग्लूकोसेंट्रिक एनवायरनमेंट होती है उससे पेशेंट को जो उसकी टॉक्सिक इफेक्ट्स हैं उससे उसको निकालना जरूरी होता है टू प्रिवेंट लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस. So that is why initiation of insulin with very high blood sugar levels. इसीलिए जब पेशेंट को MI होता है, हॉस्पिटल में होता है या पेशेंट किसी सर्जरी में होता है, हम क्यों टाइट कंट्रोल करते हैं? टाइट करते हैं ना उसको, क्योंकि उस वक्त नीड है कि कितना अच्छा होम्योस्टैटिक एनवायरनमेंट आप प्रोड्यूस करें कि बॉडी अच्छा रिकवर करे, अच्छा रील करे और लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस को मैनेज कर सके. So initiation of insulin can be at all stages. जैसे डायग्नोसिस में भी कर सकते हैं, when 2 or 3 oral anti-diabetic drugs fail to achieve the target तब भी कर सकते हैं, और chronic complications में जब आप better glycemic control चाहते हैं तब भी कर सकते हैं. It has to be individualized. Thank you very much. माइक्रोवेस्कुलर और दूसरी वाली लेट एजेस के अंदर जो लोग आते हैं, आपके बूढ़े लोग हैं, एजेड लोग हैं, उनके बाद चाहे जो मर्जी का आप शुगर की जो मर्जी कर दें, वो कॉम्प्लिकेशन हो चुकी हैं या हो रही हैं और वो उसी स्पीड पे चलती रहती हैं, फिर कुछ नहीं हो सकता. मेरा ख्याल है कि आज डॉक्टर सोमिया का इंसुलिन के ऊपर एक जबरदस्त प्रेजेंटेशन. तारिक, आप प्लीज ऊपर आ जाएं और लेटेस्ट अपडेट्स दे दें और कंक्लूडिंग रिमार्क्स. तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ मेडिसिन का प्रोफेसर साजिद अब्दुल्ला साहब का और आपका इतना कंट्रीब्यूशन है कि, और प्रोफेसर जावेद अकरम साहब का, कि मेरा ख्याल है कि ये डॉक्टर सोमिया हमारे जो पेरिफेरी पे डॉक्टर बैठे हुए हैं उनका इस कोर्स के बारे में इतने अच्छे रिमार्क्स हैं और लोगों को बेशुमार नई चीजों का पता चला, बेशुमार गलत चीजें हो रही थी और उन्होंने बड़ा अच्छा इसको अप्रिशिएट किया है. और मैं ये समझता हूँ कि आपकी सोसाइटी और हमारी ने मिल के और गेट्स फार्मा ने जो ये इसको किया है, लोगों की बड़ी अच्छी, और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये जब कोर्स मुकम्मल होगा हम इंटरनल मेडिसिन की बाकी जो चीजें हैं उसको भी लेके चलेंगे. आप दोनों का बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ लाए, इतना टाइम दिया. और मेरी जैसे अपने तमाम दोस्तों ने कि हमारी फैमिली में जैसे आपने पता कि साइंस अक्टूबर से लेके 30 अक्टूबर तक इंशाल्लाह होगी, और उसमें भी आप कोशिश कर रहे हैं कि उसको थोड़ा डिफरेंट, और उसमें भी पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ इंटरनल मेडिसिन और बाकी जितनी स्पेशलिटीज की सोसाइटीज हैं उनके साथ मिल के हम एक नई चीज, ताकि हमारे फैमिली को जो लेटेस्ट नॉलेज है वो मिले. और इसके अलावा कल हमारा एक गैस्ट्रोकॉन के नाम से एक सिंपोजियम है, ये मार्केट रोड पे होटल है जी, रमादा होटल. यस, तो सुबह 10 बजे आप जो लोग वहाँ पे आए तमाम इनवाइटेड है. तो बहरहाल मैं आप तमाम दोस्तों का जो कि आज इतनी गर्मी और इतना सारा अवस्त के बावजूद यहाँ पे तशरीफ लाए, आपका इंतहाई मशहूर हूँ. जो ऑनलाइन हमारे तकरीबन मोर देन 200 लोग जिन्होंने पार्टिसिपेट किया उनका भी बहुत शुक्रिया. और आखिर में एक दफा फिर मैं डॉक्टर सोमिया का, डॉक्टर साजिद अब्दुल्ला का बहुत मशहूर हूँ. थैंक यू सो मच.
डॉक्टर तारिक महमूद मियाँ, प्रेसिडेंट एकेडमी ऑफ फैमिली फिजिशियन और चेयरमैन ऑर्गेनाइजिंग कमेटी फैमिलीकॉन। मैं डॉक्टर सईद अहमद, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट एकेडमी ऑफ फैमिली फिजिशियन और चीफ एग्जीक्यूटिव एसोसिएशन ऑफ फैमिली फिजिशियन हूँ। मैं हूं डॉक्टर ताहिर चौधरी, जनरल सेक्रेटरी एकेडमी ऑफ फैमिली फिजिशियंस पाकिस्तान। मैं डॉक्टर मोहम्मद अब्दुर्रहमान, सेक्रेटरी फैमिलीकॉन 2022 आपसे मुखातिब हूँ। मेरा नाम डॉक्टर अहमद नवीद भटिया जी, मैं वाइस चेयरमैन फैमिलीकॉन। मैं डॉक्टर नाहिद नदीम, पाकिस्तान एकेडमी ऑफ फैमिली फिजिशियंस की लेडी वाइस प्रेसिडेंट हूँ और लेडीज विंग की चेयरपर्सन हूँ। हर साल की तरह इस साल भी मैं आप सबको 2022 के फैमिलीकॉन में खुश आमदीद कहता हूँ। फैमिलीकॉन इस दफ़ा अक्टूबर में होने जा रही है, 27 से 30 अक्टूबर तक। हर साल की तरह ये भी इंशाल्लाह एक मेगा इवेंट होगा। इसमें पूरे पाकिस्तान से पार्टिसिपेंट्स आ रहे हैं और इसमें जिस तरह लास्ट ईयर 6,500 से ज़्यादा लोगों ने पार्टिसिपेंट किया था, इस साल हम कोशिश करेंगे कि ये टारगेट हमारा 10,000 का है ऑल ओवर पाकिस्तान फैमिली फिजिशियंस, जिसमें कराची से, हैदराबाद से, पेशावर से, मीरपुर से, नवाबशाह से, KPK से, कश्मीर, गिलगित, सब इलाकों के जो फैमिली फिजिशियंस हैं उनको हमने दावत दी है। और इस दफ़ा हम इन 4 दिनों में पहले की निस्बत थोड़ा सा डिफरेंट कर रहे हैं। हम नए सब्जेक्ट्स उसमें ला रहे हैं और पूरे मुल्क से हम इनवाइट कर रहे हैं अपने फैमिली फिजिशियंस को। और इस दफ़ा आप एक चेंज देखेंगे हमारी कॉन्फ्रेंस में, जो कि पहले आज तक नहीं हुई। इसमें हम मुख्तलिफ वर्कशॉप्स करेंगे। हमारी लेडी डॉक्टर्स के पास गायनी और अल्ट्रासाउंड की वर्कशॉप है। मैं अल्ट्रासाउंड की वर्कशॉप करूंगी। इसमें हमारे माया नाज प्रोफेसर्स लाहौर और लाहौर से बाहर से भी तशरीफ लाते हैं। और अल्ट्रासाउंड की वर्कशॉप इस लिहाज से बहुत कीमती है लेडी डॉक्टर्स के लिहाज से कि उनको गायनी ऑप्स जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं वो उसमें पूछ भी सकते हैं क्वेश्चंस, और उनको हैंड्स ऑन ट्रेनिंग का मौका भी मिलता है। इन 3 दिन में हम कोशिश करेंगे कि हम आपको इतना अपग्रेड कर दें कि आप आने वाले 1 साल के लिए अगले फैमिलीकॉन तक इस तमाम जो मालूमात जो आपको वहां पहुंचाई जाएंगी, इसका फायदा अपने मरीजों को पहुंचा सकें। हमारी जो ऑफिशियल वेबसाइट है फैमिलीकॉन की www.familycon.info, आपको तमाम डिटेल्स इसके ऊपर से मिलेंगी। एब्स्ट्रैक्ट्स आपने कब तक जमा करवाने हैं, क्या उनका फॉर्मेट होगा, पोस्टर एग्जीबिशन के लिए आपने पोस्टर्स कैसे सबमिट करवाने हैं, उसका फॉर्मेट क्या होगा, और रजिस्ट्रेशन की तमाम डिटेल्स हमारी वेबसाइट पे familycon.info पे अवेलेबल हैं। एकेडमी ऑफ फैमिली फिजिशियन और चेयरमैन ऑर्गेनाइजिंग कमेटी फैमिलीकॉन। मैं डॉक्टर सईद अहमद, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट एकेडमी ऑफ फैमिली फिजिशियन और चीफ एग्जीक्यूटिव एसोसिएशन ऑफ फैमिली फिजिशियन हूँ। मैं हूं डॉक्टर ताहिर चौधरी, जनरल सेक्रेटरी एकेडमी ऑफ फैमिली फिजिशियंस पाकिस्तान। मैं डॉक्टर मोहम्मद अब्दुर्रहमान, सेक्रेटरी फैमिलीकॉन 2022 आपसे मुखातिब हूँ। मेरा नाम डॉक्टर अहमद नवीद भटिया जी, मैं वाइस चेयरमैन फैमिलीकॉन। मैं डॉक्टर नाहिद नदीम, पाकिस्तान एकेडमी ऑफ फैमिली फिजिशियंस की लेडी वाइस प्रेसिडेंट हूँ और लेडीज विंग की चेयरपर्सन हूँ। हर साल की तरह इस साल भी मैं आप सबको 2022 के फैमिलीकॉन में खुश आमदीद कहता हूँ। फैमिलीकॉन इस दफ़ा अक्टूबर में होने जा रही है, 27 से 30 अक्टूबर तक। हर साल की तरह ये डॉक्टर तारिक महमूद मियाँ, प्रेसिडेंट एकेडमी ऑफ फैमिली फिजिशियन और चेयरमैन ऑर्गेनाइजिंग कमेटी फैमिलीकॉन। मैं डॉक्टर सईद अहमद, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट एकेडमी ऑफ फैमिली फिजिशियन और चीफ एग्जीक्यूटिव एसोसिएशन ऑफ फैमिली फिजिशियन हूँ। मैं हूं डॉक्टर ताहिर चौधरी, जनरल सेक्रेटरी एकेडमी ऑफ फैमिली फिजिशियंस पाकिस्तान। मैं डॉक्टर मोहम्मद अब्दुर्रहमान, सेक्रेटरी फैमिलीकॉन 2022 आपसे मुखातिब हूँ। मेरा नाम डॉक्टर अहमद नवीद भटिया जी, मैं वाइस चेयरमैन फैमिलीकॉन। मैं डॉक्टर नाहिद नदीम, पाकिस्तान एकेडमी ऑफ फैमिली फिजिशियंस की लेडी वाइस प्रेसिडेंट हूँ और लेडीज विंग की चेयरपर्सन हूँ।
हर साल की तरह इस साल भी मैं आप सबको 2022 के फैमिलीकॉन में खुश आमदीद कहता हूँ। फैमिलीकॉन इस दफ़ा अक्टूबर में होने जा रही है, 27 से 30 अक्टूबर तक। हर साल की तरह ये भी इंशाल्लाह एक मेगा इवेंट होगा। इसमें पूरे पाकिस्तान से पार्टिसिपेंट्स आ रहे हैं और इसमें जिस तरह लास्ट ईयर 6,500 से ज़्यादा लोगों ने पार्टिसिपेंट किया था, इस साल हम कोशिश करेंगे कि ये टारगेट हमारा 10,000 का है ऑल ओवर पाकिस्तान फैमिली फिजिशियंस, जिसमें कराची से, हैदराबाद से, पेशावर से, मीरपुर से, नवाबशाह से, KPK से, कश्मीर, गिलगित, सब इलाकों के जो फैमिली फिजिशियंस हैं उनको हमने दावत दी है। और इस दफ़ा हम इन 4 दिनों में पहले की निस्बत थोड़ा सा डिफरेंट कर रहे हैं। हम नए सब्जेक्ट्स उसमें ला रहे हैं और पूरे मुल्क से हम इनवाइट कर रहे हैं अपने फैमिली फिजिशियंस को। और इस दफ़ा आप एक चेंज देखेंगे हमारी कॉन्फ्रेंस में, जो कि पहले आज तक नहीं हुई। इसमें हम मुख्तलिफ वर्कशॉप्स करेंगे। हमारी लेडी डॉक्टर्स के पास गायनी और अल्ट्रासाउंड की वर्कशॉप है, मैं अल्ट्रासाउंड की वर्कशॉप करूंगी। इसमें हमारे माया नाज प्रोफेसर्स लाहौर और लाहौर से बाहर से भी तशरीफ लाते हैं। और अल्ट्रासाउंड की वर्कशॉप इस लिहाज से बहुत कीमती है लेडी डॉक्टर्स के लिहाज से कि उनको गायनी ऑप्स जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं वो उसमें पूछ भी सकते हैं क्वेश्चंस, और उनको हैंड्स ऑन ट्रेनिंग का मौका भी मिलता है। इन 3 दिन में हम कोशिश करेंगे कि हम आपको इतना अपग्रेड कर दें कि आप आने वाले 1 साल के लिए अगले फैमिलीकॉन तक इस तमाम जो मालूमात जो आपको बाहम पहुंचाई जाएंगी, इसका फायदा अपने मरीजों को पहुंचा सकें। हमारे जो